So, very good afternoon to all participants, those who have joined this cloud meeting for the third day of this NEP sensitization program. And friends, I can see that the maximum participants have not uploaded their required data on the UGC portal, that is MMTTC portal. And it will not be possible for us to give the certificates. Only very few participants have completed. Only 5 to 15 participants have completed their nomination letter, ID and photo. तो आप सभी ये देखिए कि it will be not possible for us to issue the certificate. Even you are giving the attendance here, you are coming regular, you are seeing it in the WhatsApp group, you will give the exam. Time and again, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब तक कि आप अपने पोर्टल पर जाकर अपने चीजें कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं. That will be just a good, what you will say, a gesture from our side that we are imparting something to you as in a social cause. No certification will be there. So I kindly request all the participants, सिंपल सी चीज है, एनओसी आपको आपके प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, रजिस्ट्रार से लेना है. आपका कॉलेज का आई कार्ड है वो लेना. अगर कॉलेज का आई कार्ड नहीं है तो एक टेम्पोररी आप आई कार्ड बनाइए और उसको स्कैन कर कर अपलोड करिए. उसके ऊपर स्टैम्प सिग्नेचर रहना आपके प्रिंसिपल का. टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आफ्टर दैट डोंट कॉल अस ऑन आवर मोबाइल फोन्स दैट वी हैवंट रिसीव्ड द सर्टिफिकेट्स. हमने डेडलाइन दी थी वेडनेसडे की आज डेडलाइन खत्म हो रही है और मैं देखा हूं सिर्फ 15 लोगों ने अपलोड किया है. So it is really a sorry state. So I would request all the participants to do their things. Resource person has joined our cloud meeting, Dr. Ashwinikumar Bhardwaj, sir. You're there, sir? Can you hear my voice? Yes, yes, yes. I'm there. Okay, okay. So you can take it a little closer. Okay. Yeah, no. Is it fine? Yes, sir, now it's fine. Okay. So we have today with us Dr. Ashwinikumar Bhardwaj, sir. As a resource person, he will deliver his talk on skill development. His academic qualification is MA Psychology, MBA in Human Resource Management, Master in Personal Management, PhD in Psychology, and also he has qualified in National Eligibility Test conducted for the lecturership way back in the year 1997. Currently working as a CEO Bejon Desi Foundation Nasik and Director JM Foundation Nasik since 2016. Since 2016, the primary focus is on teachers empowerment through integral education based on philosophy of Shri Aurobindo and the mother of Pondicherry. Reached out to various institutions for making teachers aware about the integral education, working on as a psychologist in the field of counseling, youth community, mental health, psychological well-being and personality assessment and psychometrics. Working as a resource person with Maharashtra Police Academy Nasik for various psychological perspective. Was the principal in a reputed women's college in Nasik for 5 years. Worked as a head of the Department of Psychology in
Boshna Military College, Nasik. Has a vast professional experience for training employees for more than 23 years. Worked as a resource person, chairman, has given keynote address at various international, national, state level conference seminars in the field of psychology. Also has presented the papers in that psychology conference. Also is a recognized evaluator of MPhil and PhD thesis. Also have successfully conducted several workshops on executive development, training workshops on topics like team building, human interactions at workplace, time management, stress management, decision making, strategic management, SWOT analysis, interview techniques, personality development, anger management, problem solving and creativity, conflict management, leadership development, communication skills, and goal setting. Life member for many professional and renowned organizations in the field of psychology, such as Indian Academy of Applied Psychology, Indian Association of Human Behavior, Sport Psychology Association of India, and also a life member of National Association for Blind. Certified soft skill trainer, certified by University of Pune, then visiting faculties for PG Research Center for Psychology at Nasik. Completed 2 levels of handwriting analysis and also is a co-author of a book. So it is indeed honor and pleasure to have Dr. Ashwinikumar Bhardwaj sir here as a resource person. So I would now hand over the session to him. Over to you, sir. Thank you, Rafi, for the elaborative introduction of mine. It's indeed a pleasure to talk on a topic of skill development, which is organized on the behalf of, you can say, UGC, Mission for Teachers Training Center, and Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad. Indeed, it's a pleasure to talk upon NEP and basically orienting people and sensitizing, a very positive step by the UGC, because this time the NEP has made a huge change in the perspective of education, right from the pre-primary to the higher education. So something which I think the whole industry, academia fraternity was looking for after a gap of almost 3 decades, that what national education policy is going to bring. And not too much of the surprise, but yes, there is a huge change. And though the letter has come up, the script is beautifully written. Now the challenge is how we are supposed to bring this NEP into action. That means the spirit has to be brought into it. I'm seeing there are almost 88 participants at this point of a time. My special thanks to the director, Professor Dr. S.S. Patel and Mohammed Rafe also to give me this opportunity to speak to the, you may say, the length and the breadth of the India participants. So skill development is, before going into the skill development, we are going to have certain preamble, and then we are going to get on what the national education policy has recommended for the skill development in 2020, a much awaited policy. So the National Education Policy 2020 proposes a revision and revamping of all aspects of education, including the educational structure, regulation, governance, create a new system which is aligned with the aspirational for the 21st century. It's a forward-looking policy we can talk about. It is something which has completely changed the paradigm, completely a new perspective is being given. So it's all about revision, revamping in all aspects, right from education, infrastructure, because if you see, a huge change is to be brought into the pre-primary and the primary and up to the level of 10+2. And then we are supposed to talk about the higher education. So educational structure, regulation also, we are looking forward for something known as education commission at the lines of election commission, where you will have a single point of connect or a very statutory body, powerful body to take up the calls, whatever happens in education. So governance to create a new system which is going to be looking forward for the 21st century challenges, because we are supposed to create the youth for 21st century, and higher education is the predominant area to look forward to it.
According to this policy, if we talk about by 2025, now we are supposed to realign with 2025, 50% of the learner through the schools and go into the higher education. So the gross enrollment ratio, which at this point of a time is somewhere close to 20, somewhere in the next couple of years, the central government and the Ministry of Education is looking forward to increase this gross enrollment ratio up to 50%. That means a huge change in every aspect, in the aspect of the infrastructure, in the aspect of new institutions coming up, autonomy is to be given to the higher education, this one. So a lot of things, because if we look into the pre-primary education or the school level education, the target over there is that we are targeting for 100% enrollment. So 100% enrollment at the primary and pre-primary and the, you may say about 10 plus 2. And somewhere we're looking forward for 50%. Pandemic was there, the policy was not enforced in 2020, though it was submitted, but pandemic made us to go back, stepping back for some time, for some years, because this whole education policy is to be implemented in the length and the breadth of the India. And we all know that education is even as a equally, what we can say, the state plays equally important and quite dominating role in implementing any education policy coming into it. So state congruence is also being needed, and that really took some time, and now it is being implemented. It's being initiated in most of the, you may say, central universities, state-owned universities, private universities have already gone up to it. So 50% of gross enrollment ratio is that what the NEP is targeting in next few years. So at the same time, exposure for the vocational education, from which a clear action plan with targets of timelines. Now, this policy has something where we have at every stage, a timeline is being put into force. What is to be done, when it is to be done. So there are a lot many, we can say, checking, rechecking, assuring, targeting, and it's in the most of the lines of what we can say about a very time-bound program, because national education policy is a forward-looking document. By the year 2035, it is something which is that the whole of the letter has to be implemented by 2035. So a good number of years, but still, when we talk about the demography and the geography of India, it becomes really very challenging. But yes, a forward-looking document in that case. We'd like to see that changes, positive changes in the system coming up by 2035. So proper guidelines, targets, timelines are already in place. What we can see, the policy aims to overcome the total social status hierarchy associated with vocational education. If you see, for the first time in the history, yeah, previously also there were attempts made by some other commissions, right from Kothari Commission and other commissions. But for the first time, vocational education has given a significant importance at the school level itself. At the, not exactly at the primary, but 7th, 8th, 9th standard, 10th standard, 11th standard, subjects are being introduced so that the vocational education is somewhere taken care or catered at the early age itself. So the higher when they move into higher education, they will well equipped with minimum one, or they are equipped with multiple skills when they come into for higher education. So the investment as far as being concerned with the model schools, when we talk about adult drinking labs coming into it, incubation centers coming in. So the grassroots work has already been initiated. Somewhere it is being taken care that in the primary education or the school level education, if I would like to correct myself, vocational education has to start at early, maybe from 6th standard onwards to 7th, 8th, 9th, 10th. So equipping them in that vocational education, and this is
to be brought into the mainstream, talking about into mainstream education institution in a very not going to be done randomly. It is going to be more of a planned way that how we are going to take up vocational education, beginning with vocational exposure at early ages in the middle and the secondary school. Quality vocational education will be integrated smoothly at several, you may say, schools and higher education. The target is every child will learn at least one vocation, at least one. That's the target, okay? And if we talk about the number of schools, if we talk about number of higher educational institutions today, okay, we are having almost more than 45,000 colleges at this point of a time with those who are providing higher education. And if I talk about alone of Maharashtra, there are almost 180,000 schools, those who are being registered. So the quantum of work, you may say the infrastructure or number of schools, but every school has to introduce. So there is what we can say a system which is being enforced, and there are going to be regulatory bodies, those who are going to take care of it. So a system is placed where quality vocational education will be the integrated smoothly in the schools. This would lead to emphasize the dignity of the labor. Why we are introducing skills at the early age or in the school level itself? Because we find seldom we find that the skills are being taken in a more dignified way, or they are being respected, whether it is about plumbing, whether it is about electrician, whether it is about messering, whether it is about contractual labor, carpenting, or whatever it may be, whether the skill is being taken in a more dignified way. So imparting skill with dignity is what the actual aim of bringing into it. So it is something which is to be done with a dignity. At the same time, every child must have the importance of various vocations. It also talks about Indian arts. It also talks about artmanship. It talks about something which is to done with the local, you may say, skills. Every state, every district, every, you may say, taluka has that particular type of Indianization of skills. So that also is being taken into consideration. This would lead to emphasize the dignity, as I've already mentioned, on Indian art. The target is by next years, as I already mentioned, 50% learners go through the school and higher education system, and they should be given equal and good exposure for vocational education, for which a very clear-cut action plan is being in placed. We are going to go phase by phase, and what action plan the central government has put on record in Lok Sabha by the minister. We are going to read that also, and will emphasize on that aspect also. Vocational education will be integrated in the educational offerings of all secondary schools in a very phased manner. It is planned, it is systematic, and it has to be implemented. So that phase manner is going to be done, and it is not done in a year or two. It may be done in the next decades, because as we know, skills sometimes go out of order. Sometimes new skills are to be taken into consideration. We have never thought about artificial intelligence coming in such a big way in last 3, 4, 5 years. And now we need courses based on artificial intelligence. Many of the engineering colleges are shifting their attention from regular, you may say, engineering courses to artificial intelligence and software engineering and all. The development of vocational capacities will go hand in hand with the development of academic and other capacities. So, yes, skill development need a lot of practical approach. At the same time, one cannot leave academics completely out. So it is going to be in a hand that both goes simultaneously. The vocational skill acquisition, acquiring the skills, and the academic theoretical background also. So academic and the other capacity. To achieve this objective, we need secondary school have to collaborate with industrial trainings, or we can say about
IITs, we can talk about polytechnics, we can say the institutes which are imparting skill development. The schools are supposed to integrate, or they are supposed to make collaboration with these institutions, those who are offering vocational training after 10 or after 10+2. So at the same time, IITs, polytechnics, local industries, yeah, because we find that there is a huge gap when it comes to industries and academia. So the interface has to go many folds. What industries are actually asking for and what our curriculum is actually offering. So that gap has to be reduced. So the local schools are to be empowered for uh, collaborating with the industries which are being nearby. Skill labs will also be set up and to create, and the schools, as I've already mentioned, more than 10,000 schools today own Atal Twinkling Lab, which says about innovations, which says about we are supposed to think ahead. It talks about robotics, it talks about artificial intelligence, it talks about CNC machines. There is a lot of innovation, a lot of machineries, a lot of software which has gone into through Atal Twinkling Lab. So the labs are to be set up, created in the schools hub we can have, which allow the schools to use the facility. Higher Education Institute will offer vocational education in their own and in a partnership with industries and other institutions. So there is no every higher degree, you may say higher education institute has to offer these things. These are the things which are what we can say are now made compulsory, mandatory. You cannot, and without the skills, probably our existence itself is going to be a big question in higher education today, because most of the private university and the autonomous institutions are offering skill-based courses. So vocational education, either on their own, would be wonderful, and we have seen it out in the past decade. There are many institutions through the UGC has gone for vocational degrees. BVOCs came into a big way, which has a lot of skill development into it, whether we talk about skill secretarial practice, whether we talk about catering, whether we talk about management, whether we talk about other courses, mechanical trades and into it. So BVOC was initiated in the last decade. If you see that the homework is being done to bring skill development in a big way. It's nothing that it has been suddenly came up or erupted suddenly and the policy has been put into it. And when we talk about it, is something which has to do with the 21st century requirements. Okay, 21st century is going to be a challenge, and what goes best in India way is that we have the youngest country when it comes for the below the age of 40, and we talk about probably we will be the skill provider to the world in the next coming decades. So huge scope for the employability also. So we talk about vocational in their own partnership with industries and other institutes also. The Ministry of Education has come up with with so many other aspects to highlight the significance and seeing that how it can be achieved. So let us see what is being recommended by the National Education Policy 2020. In a nutshell, not very much in depth, but we all must be aware that what the NEP has done in 2020, the first and the foremost thing which they have done is that there is no hard separations between arts, science, between curricular and extracurricular activities. Now, when we say no hard separation, that means every subject has the same significance. Now, it has actually again started from the school setups, where we have seen that the extracurricular subjects are again marked as a curricular now. If we remember, sports were always being put into extracurricular. Today, sports is something which is the integral part of the curriculum in the school setup. And if you know about it, 45 minutes of regular physical exercise is being recommended by the NEP for every school. Every school is being made mandatory that they have to go through the
physical aspect. So previously, why people were not, why the children were, or the parents were not very positive about sports, or not very positive about the extracurricular ones, because they were treated extracurricular and there was nothing, no evaluation system, or it is not going to come up into their progression card. Today, if we see, it is now, there is no separation. If the child takes a sport, he will be evaluated on that. If he takes art, he will be evaluated on that. If he takes craft, he will be evaluated on that. So when we talk about extracurricular activities, today NEP has taken away that hard separations. The child has, or the learner, it is more learner centric approach. If we talk about it, is more about student centric approach. It is moved from teacher centric to a student centric approach. So the no separations. And if we see art, science, commerce, no hard separations in the higher education today, because other streams are giving them electives, other streams are giving more options, because the child is going to pick up the subjects. Now, the courses which normally we talk about, previously it used to go by the institutions. Now it is being changed. Now it is more what the child actually is looking for, what the child actually demands. So there is no hard separation in arts and science between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams, in order to eliminate harmful hierarchies among the areas of learning. So hard separations are being taken. We have seen that some children are good in what we can say mathematics, but they have chosen arts as the faculty. So they were never being given a chance to go for mathematics. Some children are equally good in engineering, but they would like to go for an elective in music, political science, public administration, psychology for that matter. But since the rigidity was there, today that rigidity is being taken away. Today that more options. So I would like to put it out that the children or the learner are being given an a la carte. When you go into the restaurant or in a hotel, you ask as per what you need. So it's more of the children need which are being put into forth rather than what an institution is offering. So a student-centric approach, no hard separation as far as the art, science, and the commerce is covered the subject, and that makes the whole perspective change. At the same time, what happened is now, as concentrated national effort is being taken to ensure universal access and offered opportunity to children in of the country to obtain quality holistic education, including vocational education, right from the pre-primary to grade 12. So something which we am talking about holistic, the moment I say holistic, it is something which is samagra in a Hindi if we talk about. So it's a holistic approach. It is talking about the universe. Every child must have the access to education, and that we all know that India has made mandatory, what we can say, right to education is a fundamental right today. Every child has a right for the education. So access, at the same time, he or she should have affordable education. That is another criteria, because sometimes we talk about education is not in the reach of a common man or a common child, but national education policy is focusing on that aspect also, that education should have quality, it should have offered opportunities, and it should have, every child must have an access. So access to quality education, offered opportunities for all the children for its holistic, integrated development of the personality. Now, when we talk about the integrated development of the personality, we are talking about a course segment. The topic of mine is skill development. So even the vocationalization, early vocationalization, right from the pre-primary school to grade 12, that's again a recommendation, okay?
The secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary, as we all know that now degrees are being changed. The first year is being certificate, second year is a diploma, third year is you can talk about the degree, and then you can go for the fourth year integrated degree nowadays. So the secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary study. Now, again, the highlight is something which is talking about multidisciplinary. Now, gone are the days when we are going to have a one-sided or one way. No, it is going to have integrated. It will have opportunities from other subjects also coming into it. So multidisciplinary study, building on the subject-oriented pedagogy and curriculum style from the middle stage, because the middle stage from a eighth standard onwards, child is going to have a choice of the subjects to pick up. So a lot more choices are going to be given at the middle level, but with a greater depth, attention to life aspirations, flexibility, student choice of subjects. Now, when I talk about in-depth, when I'm talking about life aspirations, flexibility, student choice. Now, these are the things which were being in a great demand from the public or from the society itself, that the child must have his own life aspirations should be reflected in the academics. How it can be done? It can be done only when the child has the flexibility, when he has the choice, when he can move from one subject to another subject, when he can choose electives apart from the stream. When we say about hard separation, previously an art student was never able to get any subject from the commerce, or a commerce student was not able to get any subject from the science, or the science well never used to get any subject from the arts fraternity, humanities as such. National education policy has broken that shackles. It's giving more flexibility, more choice to the center, because the child is a learner. Actually, he wants to learn. So what we can give him the more is something which is about it, the choice of the subject. In particular, students will continue to have option of exiting after grade 10 and re-entering at the next phase to pursue their vocational or any other course available after 11th and 12th. We have, somewhere you might have came across that national education policy is giving uh, choices to the student. So it can be exiting at any time and entering at any point of a time. So the moment I say exit and entry, that means the child has given more flexibility. And we have seen it out sometimes in the previous system of the education. Some students, when they have left the education, were never able to come into the mainstream education back. NEP 2020 is giving that windows for the college dropouts, for the school dropouts, to come into the mainstream at any point of a time. Okay. Yes, when I say any point of a time, every university is going to fix up their own criteria, their own framework on structure, procedural structure, that when somebody comes, whether there is going to be another, you may say an orientation program, or one can say something which the foundation courses to be developed, so that based on the foundation check, the child or the student or the learners can be given admission for the further studies. So multiple exit, multiple entry for the university level education, for college level education, no hard separation, flexibility, choice of the subject, the life aspiration of the learner somewhere coming into the central point, and making them come into to pursue their own vocational, any other courses, including a more specialized school if desired. These are the things which are proposed by NEP. Student will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly from secondary school, including subjects, as I've already mentioned, physical education, the arts, the crafts, and the vocational skill, so that they can design their own paths of study and their own life, what we can say,
life plans. Uh, I've closed my window because there was an issue with the bandwidth. Okay, so that's the reason I have closed my window. Video. Otherwise, the voice breaks or the video gets stuck at a one point of a time. So it's a conscious choice of not putting the video right now. But at the right time, when the bandwidth gets better, I will definitely put my video on. So integration of vocational education programs into the mainstream education in a phased manner. Till now, we were not so okay with vocationalization at a higher education level or institution of higher education. So we are integrating of vocational education programs into the mainstream. What things can be brought into arts, what things can be brought into commerce, what things can be brought into the science, engineering, management, lot many, you may say, faculties into mainstream education in a phased manner, including beginning with vocational exposure at early ages, as I've mentioned, right from the middle and from the higher education or for the secondary education. There is a concept of Loka Vidya for the first time when we talk about Loka Vidya, important vocational knowledge developed in India. As we all know, we were termed as what we can say having a rich heritage in education. Okay, so the Loka Vidya, the knowledge which is very much local, okay, developed in India, will be made accessible to the students through integration into vocational educational courses. So vocational education will be integrated into all school, higher education institution in a phased manner, as I've already mentioned, over the next decade. Focus areas of vocational education will be chosen based on the skill gap. Now that is more important. What is the skill gap? So we need to do some assessment of the skill which the child is already having. So the skill assessment is to be done. And when we talk about the skill assessment, how it is to be done. So there are going to be bodies, there are going to be assessment centers, or the schools or the colleges are supposed to do that skill gap. Okay, what is the gap between what we are trying to give them and what is the gap between them? Okay, so we choose it based on the skill gap analysis and mapping of local opportunities. When I say mapping of local opportunities, what is there in your own local territory? Okay, what skills are in demand? Okay, one skill which is in demand in Maharashtra may not be in demand in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Karnataka. Every state, every district has certain local demand sets of skill. So the skills which are being required locally, which is going to be done through Loka Vidya, what are the skills, which are the skills which the local students need at the most. In Maharashtra, we talk about Warli paintings, we talk about tribal culture, or the tribal skills of making uh, furniture through bamboos. So these are the skills which are going to be locally based or local demand based. Okay. And there are certain states which may be of a high end. You may need skills based on technology. You may need skill based on software. You may need skills based on hardware. Okay. But again, the local demand. Now, in simple terms, we can say from near to far. What is the requirement of local? What is the requirement of the local area itself, and then can we go for global demand and the global requirement? So thinking locally, what we can do at the same time, that skill gap analysis, mapping of local opportunities. As we all know, the Ministry of previously named as Human Resource Development, today as Ministry of Education, is in what we can say is constant touch with National Committee for Integration of Vocational Education, consisting of experts for the vocational evaluation and representative across the ministry in collaboration with. So there is almost 20 ministries which are coming up in a big way
to identify the skills which the ministry need. That's a huge, huge initiative by the different ministries itself. We are going to get into some depth of that, which ministry is normally looking forward for all these aspects. But yes, institution to go with the partnership, we talk about when we say about ministries, 20 ministries in collaboration with industry oversees this effort, okay? Individual institutions that are early adopters must innovate. As we know, there are engineering colleges, pharmacy colleges, management colleges. Now, these are supposed to adopters must innovate to find models and practices that work and share these with other institutions. Because, as we know, NEP 2020 proposes clustering of colleges from 45,000 to bring them to 15,000. That means huge, huge number of colleges are going to come together to make a cluster. So the colleges are those who are good, those who are having a beautiful infrastructure and beautiful, what we can say, the program as such. They are supposed to take the lead role in sharing their expertise with the colleges, those who are like some colleges are single stream colleges, only art college, only commerce college, only science college. Probably they will have more challenges. So the institutes, those who are having earlier experiences, are supposed to share these with other institutions through mechanisms set up by the National Commission for Integration of Vocational Education. So a body is already being set up, which is supposed to take the initiative, and through that, so to help extend, reach the vocational education, different models of vocational education. We can have apprenticeships. Now, these were there in engineering colleges previously. These were there in the management colleges previously. Now, since we are breaking the shackle, we are taking care that there is no hard separations. So this is to be done now. The apprenticeship has to come. Now, in case of, say, about somebody who's going for psychology today, or somebody who's going for sociology, or somebody who's going for anthropology, somebody who's going for geography, somebody who's going to do something in the history, what sort of an internship can be offered in the subjects domain of humanities? So one has to collaborate with different, you may say, institutions. In case of psychology, yeah, there is a great demand in hospitals. There is great demand in working in the social sectors, NGOs, reforms, government sector, schools particularly, where we need the counselors. So is it possible that the last semester of the course can go for internship or apprenticeship as such, so that the child actually gets hands-on experience before entering into the market? So a very conscious thought of bringing apprenticeships. At the same time, will also be experimented by higher education institution. Incubation centers will be set up in higher education institution in partnership with the industries. Now, there is something which is now coming up, like industries interface, industry academia interface. Most of the institutes at times don't have that leverage of having industries and academia interface. And we have listened to many a times that what we are offering in our education today, I'm talking about, say, about 5 years, 10 years back, is it what the industries are actually asking for? Or the industries are asking something different and we are offering something different? Is there a gap between what is happening in academia and what is happening in industries? So to bridge that gap, we need to have collaborations, we need to have partnership, we need to have what we can say MOUs, okay, which are to be signed. And these MOUs, what sort of collaborations we have. UGC has recently came up with that if the institution really wants to make up an international collaboration, they have to take a prior permission from the UGC.
But as long as the industries goes, as long as the local demand goes, the colleges, universities knows much better, and they can do the gap analysis, the skill gap analysis, that what the industry is asking for. Okay, and we have seen in Maharashtra particularly that some of the polytechnics, some of the IITs are being actually adopted by the industries. Now, these industries are making their own syllabi because they know what the industries are looking for as far as the skill is concerned. So, skill based, what we can say, institutions, collaboration, partnerships with the industries is going to be the demand of the hour if we are successfully going to implement the NEP in the near future, which we are already doing it. The National Skill Qualification Framework, as we all know, NSFQ, they have started with minimum 3 credit points to 12 credit point, 18 point credit point courses offered to the, you may say, undergraduate and postgraduate colleges. Most of the universities have adopted to it, working on different, you may say, means to work on it. Even the smallest task, okay, right from if somebody wants to get into a job of a courier service, okay, how to track a courier, okay. Today it is being done by artificial intelligence, no doubt about it, but tracking it, how the delivery, whether the delivery has been reached, how to prepare the catalogs, how to prepare work on. So there are thousands and thousands of tasks. NSQF, that is National Skill Qualification Framework, will be doing a detail further for each discipline, vocation, and profession. Okay. Further, Indian standards will be aligned with the international standards. Now, this is something which is very challenging. Okay. We have our own Indian standards. At the same time, whether we are qualifying to reach to the international standards even, okay, in technology and what we are integrating, okay. So an institution is going to be set up to check whether we are matching with these standards, are matching with the international standards also. Standard qualification of occupation maintained by ILO, that is International Labor Law Organization. This framework will provide the basis for the recognition of prior learning. I think we are somewhere aware of it, that we have started giving equivalence certificates. The moment I say equivalence certificate, and this initiative was taken by the, you can say, the Department of Education, where somebody is having a lot of practical knowledge, but his practical knowledge is not having any authentic document as such. So there are certain institutes which are being set up to for these, you may say, learners, where they can go, give their exams, and their knowledge is now being given an equivalent certificate for 12th standard, for further studies, that this learner possesses these many minimum skills, which makes him qualified to be given a basic equivalent certificate. So that recognition of prior learning, okay, when we are talking about uh, early exit, and at the same time, anytime you can exit and come up to the mainstream education, multiple exit and multiple choice entry, we need to check the prior knowledge of the learner too. And that knowledge is to be checked by the competent authorities, by the competent bodies, which are now taking up the shape. Through this, the dropouts from the formal system will be reintegrated by aligning their practical experience with the relevant level of the framework. Definitely, we need a framework. Definitely, we need a structure for evaluation. And the major game changer, if we talk about NEP, which has brought in higher education, is something which is credit-based framework. Now, as we know, India is fast growing a nation,
economically, if we talk about 5 trillion economy, 10 trillion economy, we are a force to reckon in international business. Our presence is very strong in economic forum today. And when we talk about all this, and when we see the mobility today, okay, gone are the days when a particular learner will stick to one a particular university to complete his or her complete education. Nowadays, we find it out there is a movement, which is an upward movement, where the learner want to upgrade the skills from one university to another university, from one institution to another institution. So these institutions have introduced, might have done half of his education in one of the premier institute, can carry the credits to the other university now. So it's the knowledge not wasted anymore. It is being recognized, rather valued now through the credit-based framework, will also facilitate mobility. Now, the moment I am having, I can take away my credits to other institute. I can take away my credit to another university. We are encouraging this mobility. We are encouraging the thrust of the learner where he can get the best possible, what we can say, environment, enriching environment, so that he can sharpen his skills, he can he can enrich his knowledge or her knowledge that way. So the credit-based framework will facilitate mobility, general, in general, I would say, and even in the vocational education. Now we have institutions of to reckon with. Okay, we have Indian Institute of Technology, we have Indian Space Center, we have National Institute of Technology (NITs). We have so many organizations, sometimes autonomous organizations, deemed universities, central universities across. Okay, conventional university, no doubt about it. And there are institutes, those who are being graded A++ and all. A child can carry one's credits and can move on to other universities. So that's the biggest, and something which was a path breaking, I would like to say, in Indian education system, that NEP has brought. Rather, before NEP, we were having a credit-based framework, no doubt about it, but it has revolutionized. It has brought a very, very big change in the system, okay, across what I would like to say, to much to the learners' happiness, to learners, making the environment more, what I would say, congenial for the learner. So NEP is doing that. Now, this was what is the framework when we talk about, because the skill development is a large subject, okay, which need a lot of, you may say, research, okay, because NEP is just initiated and we are talking about sensitizing people about NEP, no doubt about. We are going to take a conscious break over here for about 5 minutes. We are speaking from almost an hour and so almost. We'll be taking a 5 to 7 minute break. And after that, we are going to join again. Around, say about, this session is going to go up to 5:30. So around 5:10, we'll be opening the session for the questions and the answers. I would like to suggest one thing. Whenever you are asking a question, I would request you to open up your video, okay? And then you can ask me, rather than putting anything in the window, because the chat box is almost having 56 messages by this time. And it becomes really difficult to go into chat and go for the question what is being asked. So last 15 to 20 minutes, if everything goes fine with the bandwidth, because we are living in a digital world today, okay, connectivity becomes at any point of a time an issue. So we would see that last 20 minutes are being kept as an open house, okay, where you can ask me the question. And yeah, I will try my level best to give you the answer based on my limited knowledge and experience, okay? Because this is something which is coming up in a big way. It is evolving type of a thing. And as we all know, education is something which is
a state subject also. So the success of state governments also. So we'll be taking a break for say about 5 to 7 minutes. It's almost 3:30 at this point of a time, or 3:25. 3:25. We'll be joining by in next 5 to 7 minutes. Till then, you can also take a conscious break. Yes.
We have taken a conscious break for 5 minutes. I am back. So, yes, is the audio clear now? आवाज आ रही Yes, है sir. मेरी? Yes, sir. Yes. यस यस। मैं ये बात तो एक्चुअली पूछना भूल गया कि आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी में भी, जिनको ओके रहेगा, ओके? क्योंकि मैं जब से लगा हूँ तब से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई कैन गो ऑल्सो इन हिंदी, and if it's English is fine, then we'll continue with the English. No problem in that case. Okay. So we have seen the preamble of skill development in higher education, starting from the pre-primary. हमने देखा कि हायर एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट की क्या भूमिका रह सकती है, फिर स्किल डेवलपमेंट को किस तरीके से लाया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन और उसके बाद में स्कूल एजुकेशन के साथ में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं कि बैकग्राउंड काफी ज्यादा उसके पर काम हुआ है, और फिर जाके हम लोग हायर एजुकेशन के इसमें मूव कर रहे हैं। और हमने देखा कि हायर बहुत ज्यादा हार्ड सेपरेशंस नहीं रखे जा रहे हैं, बहुत कुछ तब्दील किया जा रहा है। और ये तब्दीलियां जो भी आई हैं, ये बहुत कुछ लर्नर्स को सेंटर में रखे हुए, उसको मध्य में रख के की गई है, ताकि वो उसको एक सुलभता मिले, ताकि उसको वो जो सीखना चाहता है वो अच्छी तरीके से और जिसको कह सकते हैं समाधान रह के उसको सीख पाए वो। तो वो एस्पेक्ट मद्देनजर रखते हुए ये पूरा एक जर्नी, जिसको कह सकते हैं हम लोग, स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक, हमने ये भी देखा कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लाया गया है, ताकि जो मूवेबिलिटी है, क्योंकि आज अपने हमें सबको मालूम है कि पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स की मूवेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है जब से मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई हैं, या फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो रही है, या फिर एक जिसको कह सकते हैं कि एक सामाजिक जो एक नजरिया है वो काफी बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अब काफी लोग स्थानांतरण होते हैं, काफी लोगों की जगहें बदलती हैं। क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम शुरू हुई है वो काफी बड़ा इम्पैक्ट आने वाले सालों में लर्नर्स के दृष्टिकोण से रखेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक पाथ ब्रेकिंग जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एजुकेशन में आते हुए दिख रहा है हमें। अब इसको हम आगे कैसे लेके जा पाएंगे, क्योंकि काफी चैलेंजेस हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, शुरू से कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब स्पिरिट बहुत, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ड्राफ्ट बहुत बढ़िया बना है, लेकिन इसके आगे की चैलेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, और इन सब चैलेंजेस को हमें मद्देनजर रखते हुए हम कॉलेज के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर और इनको, जिनको बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से जो नया नजरिया लाना है, या फिर जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वोकेशन को लेके आना है, तो काफी चैलेंजेस हैं हमारे सामने। और ये एनईपी 2020 जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी से भरा हुआ कह सकते हैं खजाना है, और इससे बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी वोकेशनल सेंटर्स में, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन जो है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली हमें को देखने को मिलेगी। और इंस्टीट्यूशंस को कॉलेजेस के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में अगर हम बात करें, हम जब बात करते हैं कि वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो चैलेंजेस हैं। हम आज अभी आगे वाले जो सेशन में 1 घंटा भर जो देखेंगे, कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें सामने जाना होगा, जिनको हमें फेस करना होगा, और सबसे बड़ी बात है हमें उनको ओवरकम भी करना है। क्योंकि यस, काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की हैं। तो हम चैलेंजेस देखेंगे, और चैलेंजेस के बाद में हम ये देखेंगे कि उस एरिया में जो चैलेंज है उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको हम पीछे कैसे ढकल सकते हैं, और आगे मूव फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो है, ओवरकमिंग सोशल स्टेटस हायरार्की associated with vocational education। एक
कहीं ना कहीं स्टिग्मा है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये वोकेशनल क्या होगा। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स बच्चों ने पढ़ने ही नहीं है क्या? मैथ्स को छोड़ देना है क्या? साइंस को छोड़ देना है क्या? सब कुछ वोकेशनल के बारे में ही होगा क्या? सब कुछ स्किल के बारे में ही होगा? तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है कि ये जो सोशल स्टेटस जो जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र में मिनिमम वोकेशनल कोर्स चलता था कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए, एमसीवीसी करके नाम था उसका, वोकेशनल कॉम्पिटेंसी का जो चलता था, उसकी तरफ कन्वेंशनल लोग जाते ही नहीं थे क्योंकि उसमें स्किल है, उसको इक्विवेलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू होगी मालूम नहीं है। तो ये चैलेंजेस जरूर हैं। तो ये जो पहली जो चैलेंज है, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो करीब करीब तीन चार चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। पहला जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम देने होंगे। जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ पे कि एनईपी के बारे में हम सेंसिटाइज हो रहे हैं कि है क्या एनईपी में, क्या चीज है जो हमें आगे जाके करनी है और जो हमें चैलेंजेस हमें फेस करनी है। तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू चेंज द जनरल परसेप्शन, ये एक दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण किस बारे में? स्किल डेवलपमेंट के बारे में। ये दृष्टिकोण किसके बारे में? वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। क्योंकि हम आज भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बाद में इतने ज्यादा जॉब्स मिलेंगे क्या? इतने ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप होगी क्या? इतने ज्यादा स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट होगी क्या कि हमारा ये स्किल वैसे तो नहीं चले जाएगा जिसका कुछ यूज ही नहीं हो पाए? इंडस्ट्रीज हैं क्या उतनी ज्यादा अपने पास? सो ये एक जिसको कैसे थॉट प्रोसेस है, और इस दृष्टिकोण को तोड़ना, इस दृष्टिकोण को बदलना, तो वो कैसे कर सकते हैं? कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर किए जा सकते हैं ताकि जनरल जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, वो बदला जा सके। और इसमें मुझे लगता है कि हमारे जो भारत भर में जो जितने भी आईआईटीज हैं, जिनको पॉलिटेक्निक्स कह सकते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, उनकी मदद जरूर ली जा सकती है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैसे रखे जाए। ग्रामीण में आज भी भारत जो है वो ग्रामीण भारत बहुत ज्यादा है, शहरी भाग में काफी कम आज भी कहें। अगर हम परसेंटेज की भी बात करें तो 30 या 70% इसमें परसेंटेज में हम डिवाइड कर सकते हैं कि आज भी भारत जो है वो ग्रामीण में बहुत ज्यादा रहता है, रूरल बेल्ट्स में ज्यादा रहता है। और वहां पे एक अलग रेजिस्टेंस है स्किल्स के बारे में, वहां पे एक अलग से परसेप्शन है, एटीट्यूड है कि क्या होगा ये स्किल लेने के बाद में, मेरी एम्प्लॉयबिलिटी कैसी रहेगी, मैं बढ़ पाऊंगा एम्प्लॉयबिलिटी के उस लैडर की तरफ कि मैं वैसे ही रह जाऊंगा? तो अवेयरनेस प्रोग्राम लेना होगा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कि नहीं, ये अभी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, ये भी करिकुलर ही है। इसको भी लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और यशस्वी हो सकते हैं। तो एक जो टैबो है, एक जो जिसको कह सकते हैं कि एक थॉट है कि वोकेशनल से करियर नहीं बनता है, मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना होगा, उसको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। और वो तोड़ने का काम अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो टीचर्स की मदद लगेगी। ये थॉट प्रोसेस को करना बहुत इजी होता है, लेकिन माइंडसेट पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये माइंडसेट पे तभी काम कर सकते हैं जब उसकी यूटिलिटी दिखती है कि नहीं, इसका फायदा होगा, इससे हमें इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। हम लोग बहुत बार प्रोसेस 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 और प्रोसेस के बाद में आउटकम के बारे में सोचते हैं। आउटकम अच्छा होगा, आउटकम क्या हो सकता है? वोकेशनल, अगर आप स्कूल लेवल पे जब वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब हम प्रोसेस में जाते हैं कि एक बच्चा सिलाई मशीन का काम सीख रहा है, एक बच्चा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम सीख रहा है, एक बच्चा टू व्हीलर मैकेनिक का काम सीख रहा है, एक बच्चा मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में देख रहा है, तो आउटकम क्या होगा कि उसने वो स्किल सीख लिया क्या? वो आउटकम हो सकता है, वो एक इवेल्युएशन का तरीका जरूर हो सकता है, लेकिन प्रोसेस में क्या मिला उसको? प्रोसेस में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्रोसेस में उसका फोकस बढ़ा, प्रोसेस में उसका कंसंट्रेशन बढ़ा, प्रोसेस में उसका साइकोमोटर स्किल बढ़े, प्रोसेस में वो टीम में काम करना सीख रहा है। तो प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से आए कि अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे बने कि इसका प्रोसेस भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका आउटकम है। तो वो अवेयरनेस बने, वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाए चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल,
जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर पहले से ही वोकेशंस की तरफ लगाव निर्माण हो जाए, अगर पहले से ही स्किल की तरफ रुझान हो जाए, और वो कब हो सकता है, यही प्रोग्राम अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाए। और स्कूल में ये शुरू हो चुका है, मॉडल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालयों में, केंद्रीय शासित जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो चुकी है कि कक्षा 6 से आगे अब हमें वोकेशंस की तरफ या फिर वोकेशनल कोर्सेज की तरफ, सब्जेक्ट्स की तरफ, पहले एक वक्त हुआ करता था सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क कहा जाता था। मतलब घरों में जिस चीज की जरूरत पड़ती थी वो स्किल बच्चों को स्कूल में दिए जाते थे, वो चाहे कढ़ाई के हो, बुनाई के हो, इलेक्ट्रिक के हो, प्लम्बिंग के हो, इलेक्ट्रिक के हो, ये सब मिला करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो हम कहें कि जैसे जैसे हम आगे गए ये स्किल्स पीछे चले जाते गए। आज फिर हम लोग उसी मोड पे आए हैं कि नहीं, इन्हें हमें फिर से एक बार देखना होगा, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करनी होगी, और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो ये अहमियत कहाँ से शुरू हो सकती है, कक्षा 6 में, जब बच्चा कुछ हद तक इंडिपेंडेंट बनने की तरफ मार्गक्रम कर रहा है, आगे चलने की सोच रहा है, उसमें जो काबिलियत है, उसमें जो पोटेंशियल है, उसमें जो एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड को हम लोग एनरिच कर सकते हैं क्या? और उस चीज को, उसके एप्टीट्यूड को जानने के लिए मुझे लगता है कि स्कूल के हर शिक्षक को बहुत ऑब्जर्वेंट रहना होगा, बहुत ज्यादा निरीक्षणात्मक दृष्टिकोण से उसकी देखना होगा कि इस बच्चे का जो इंक्लिनेशन है वो किस तरफ है, और उसके लिए उसको काफी स्किल्स को एक्सपोज करना पड़ेगा। और वो स्किल्स अगर वो लोकल हो तो शायद वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। हम लोग अगर बहुत ज्यादा ग्रामीण भाग की बात कर रहे हैं, वहां पे हाई एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अगर स्किल्स हमने इंट्रोड्यूस किए, तो शायद हम उतने यशस्वी ना हो पाए जो ये स्किल्स एक शहरी भाग का बच्चा ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। तो हमें लोकल जो स्किल्स हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए वो लोक विद्या की जो बात की जा रही है, बार बार उसके बारे में बोला जा रहा है कि हमें उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। तो कक्षा 6 से कीजिए और कक्षा 12वीं तक, और जब बच्चा कक्षा 12वीं से बाहर आ रहा है तो उसका एक स्किल माइंडसेट तैयार होगा, जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है, जो आज हमारे टॉपिक का पूरा जिसको कह रहे हैं कि मेरा पूरे टॉक जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, कि हमें वो स्किल माइंडसेट देना है, वो वोकेशनल स्किल माइंडसेट देना है। तो उसके लिए शायद उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, शायद लोकल डिमांड किस तरफ है, और अगर ये स्कूल लेवल पे शुरू हो गया, जिसको कहते हैं कक्षा 6 से आगे शुरू हो गया, तो शायद हमें उतने चैलेंजेस महाविद्यालय स्तर पे ना मिले। महाविद्यालय स्तर पर आते तक बच्चा अपना एक थॉट प्रोसेस से आएगा कि मुझे इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, इस इंस्टीट्यूशन में इस चीज के ऊपर और ज्यादा काम करना है, मुझे और उसको शार्पन करना है, तैयार होना है, और उन स्किल्स को लेके मैं आगे जाऊंगा। तो वो एक चीज की जा सकती है जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी शुरू कर दी है कि स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन देना है। तो शायद हमें अगले 8 सालों के बाद में, 6 साल के बाद में, जब आप महाविद्यालय में वो बच्चे आएंगे तो काफी तैयार होंगे और काफी समझदारी से आएंगे कि मुझे किस स्कूल में, किस स्किल में मुझे ज्यादा ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी का हम काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। मीडिया कैंपेन्स बहुत ज्यादा होते हैं आजकल, तो आपको मालूम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज बहुत बड़े स्तर पे किया जा सकता है, मीडिया का यूज बहुत बड़े स्तर पे किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अहमियत मालूम नहीं होती है, उसकी सिग्निफिकेंस उसका मालूम नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि उस चीज की रिपीटेशन हो रही है, उस चीज का कहीं ना कहीं विजुलाइज कर रहे हैं हम लोग, या फिर उसको कहीं ना कहीं उसके इमेजिनेशनल पावर में हम लोग डालने की बात करते हैं, तो ये अपने जो इंटरैक्टिव मीडियाज हैं, चाहे वो फेसबुक ले लीजिए आप, यूट्यूब ले लीजिए, या फिर जितने भी सोशल मीडिया के आज माध्यम बने हैं और वो काफी इफेक्टिव माध्यम होते हैं, हम उनकी भी मदद लेके इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं। और उन लर्नर्स तक पहुंचने के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन और एजुकेशन कम्युनिकेशन का यूज कर पाए, ये त्रिकोण का अगर हम लोग यूज कर पाए, तो काफी यशस्वी हो सकते हैं वो स्टिग्मा निकालने के।
के लिए, वो गलत फहमी निकालने के लिए कि भाई वोकेशनल एजुकेशन एक एक्स्ट्रा करिकुलर है जिसका कोई भी संबंध एजुकेशन से नहीं है। तो वो जो मिथ है, उस मिथ को तोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। Preparation and distributions of brochures, leaflets, pamphlets, video shows on vocational education and the courses, ये लेके चलना होगा हमें, ये माध्यमों का जिसको कह सकते हैं हमें उपयोग करना होगा, ताकि हम लोग लोगों तक पहुंच सके। और ये देखते हुए ये समझना होगा कि वीडियोस की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, वो छोटे हो, और उतने ही इम्पैक्टफुल हो। आपने देखा होगा कि आजकल एडवर्टाइजमेंट्स हम जो देखते हैं, उनकी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की लेंथ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में अपना मैसेज, कई बार तो 15 सेकेंड में अपना मैसेज देके चले जाते हैं, और हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो वैसे स्किल्ड लोग हमें लगेंगे जो अपनी अच्छी खासी ओरिएटरी रखते हो, अपनी पब्लिक स्पीकिंग रखते हो, या फिर ऐसे लोग जिनका समाज पे एक प्रभाव है, समाज जिनको एक्सेप्ट करता है, समाज जिनको मानता है, वो रोल मॉडल्स हो जाते हैं। कई बार वो एक आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं, वो आपके मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से लेके जो भी हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स भी, फैसिलिटेटर्स भी, जो बच्चों के साथ में इजीली कनेक्ट हो पाए, उनकी नब्ज को पहचान पाए, और वो अगर उसमें डिलीवर कर पाते हैं। तो पहली चीज और बहुत फॉरमोस्ट चीज है कि ये गलत फहमी निकालना कि वोकेशनल से कुछ नहीं होता। भाई वो तो एक है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि आज तक हम उसे एक्स्ट्रा करिकुलर ही मानते रहे। और जब हम किसी चीज को एक्स्ट्रा मानते हैं तो उसका बर्डन लगता है, और जब किसी चीज का बर्डन लगता है तो वो हमें लर्निंग का वो आनंद वाला एक्सपीरियंस नहीं देता जो अनुमन दूसरे सब्जेक्ट्स हमें दे जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा, एनईपी ने ये एक्स्ट्रा शब्द ही निकाल लिया कि हर चीज को करिकुलम में डालिए, हर चीज की एक अहमियत है, हर चीज का अपनी तवज्जो है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब ये लर्नर सेंट्रिक है, तो लर्नर को क्या चाहिए वो अगर उसको परोस के देते हैं तो शायद वो ज्यादा आनंद से सीख पाए, क्योंकि वही तो मकसद है एनईपी का, कि आनंदमय शिक्षण दिया जाए ना। फोर्सफुल तो कुछ भी नहीं दे सकते। तो पहली मिथ, पहला जो कंसर्न था, चैलेंज थी, उसको इस हिसाब से मिटा सकते हैं। दूसरा जो चैलेंज है, इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत लोगों को अभी भी चैलेंज लग रहा है कि भैया हम तो पारंपरिक एजुकेशन दे रहे हैं, और इस पारंपरिक एजुकेशन में अब इसको कहाँ से वोकेशनल एजुकेशन को लेके आए। तो वो चैलेंज जरूर है, विद फोकस ऑन सोशल इंक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि जो एजुकेशन देना है वो पूरा सर्वसमावेशक देना है, इंटीग्रेटेड देना है, इंक्लूसिव देना है। और ये चैलेंज है बड़ा। क्यों बड़ा है? क्योंकि आज तक हम एक ही विचारधारा में, आर्ट्स वाले आर्ट्स सिखा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज सिखा रहे हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स सिखा रहे हैं, साइंस वाले साइंस सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं साइंस वालों का थोड़ा वोकेशनल से तो संबंध है, कॉमर्स वालों का थोड़ा तो भी इंडस्ट्री से संबंध है। लेकिन हमारे भाई हमें तो मेन स्ट्रीम में अभी वोकेशनल कोर्सेज लाने हैं, तो कैसे? ये चैलेंज है, इसका उत्तर हम जरूर ढूंढेंगे। इसका उत्तर क्या हो सकता है? कुछ हमने ढूंढे हैं, कुछ आपके माध्यम से आपको भी इवॉल्व करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोकल बेस्ड हैं। हम जो सोल्यूशन यहाँ पे देंगे शायद आपके यहाँ पे फिट हो, शायद फिट ना भी हो। तो आपको एक्सप्लोर करते रहना, यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग व्हाट मे बी द बेस्ट मीन टू ब्रिंग एन इंटीग्रेटेड एजुकेशन of vocational education in the mainstream education, because today whole of the country is running on a mainstream education। पारंपरिक पद्धति से हम लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन पे ही फोकस करते आ रहे हैं। एनईपी ने वो दृष्टिकोण बदला है। तो क्या कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल बेस्ड एक्टिविटीज प्री स्कूल टू ट्वेल्थ, पहली चीज जो हम कर सकते हैं, कि जहाँ पे बच्चा आर्ट भी सीख रहा है, क्राफ्ट भी सीख रहा है, हिंदी भी सीख रहा है, अपने भाषाएं सीख रहा है, साइंस सीख रहा है, बाकी जिसको कह सकते हैं आप सिविक्स सीख रहा है, उसी वक्त अगर उसको बचपन से ही कक्षा, छोटी कक्षाओं से लेके बड़ी कक्षा तक अगर वो साथ साथ स्किल को लेके चलता है, तो वो स्किल हम जब मेन स्ट्रीम में लाएंगे, अगर हम जो कॉलेज में लाएंगे, तो वो उसको अछूता नहीं लगेगा, वो उसको नया नहीं लगेगा, वो उसको बर्डनसम नहीं लगेगा, वो उसको तकलीफदायक नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि वो बचपन से एक स्किल सीखते आए। जैसे मैंने आपको प्रियम्बल में कहा कि उद्देश्य क्या है कि कम से कम हर बच्चा एक स्किल में मास्टर बन जाए। मल्टीपल में बन जाए तो कोई कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक में तो बने, कम से कम एक लेके तो आगे निकले। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने स्किल ले लिया तो उसी स्किल में उसको नौकरी मिलेगी, आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जब स्किल लेता है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस लेता है, उसके साथ में तजुर्बा लेता है, उसके साथ में एक माइंडसेट लेता है, उसके साथ में उसकी जो पर्सनैलिटी के जो दूसरे आयाम हैं वो भी विकसित होते हैं। तो हर बार वो स्किल का जॉब से ही संबंध, नो डाउट हम लोग स्किल का संबंध एम्प्लॉयबिलिटी से ही लगाएंगे और लगाना भी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा वो स्किल को लेके उसी नौकरी में जाएगा ऐसा नहीं है। शायद वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, शायद वो कुछ और बन जाए। लेकिन पहली और जो फॉरमोस्ट चीज है, हमें इसे अपने कल्चर में लाना होगा, हमें अपने इसे एजुकेशन सिस्टम में लाना होगा। और एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल से होती है। और स्कूल्स में जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे कि भैया आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ में ये भी दिया गया है, इसमें से आपको चॉइस करना है। फिर से फोर्सफुल इंटरवेंशन नहीं है, फिर से जबरदस्ती नहीं है कि करो ही, नो। एक स्कूल हो सकता है वो 3 स्कूल, चार स्किल्स के ऑप्शंस दे सकता है। अब बच्चों को उसकी काबिलियत के या फिर उसकी पोटेंशियलिटी के हिसाब से, उसके इंक्लिनेशन के हिसाब से उसको चूज करने दीजिए, तो शायद वो उसे आनंद से सीखे। तो पहली चीज कर सकते हैं। दूसरा है, हमें रिफॉर्मिंग करिकुलर थ्रू एनहांस्ड कंटेंट ऑफ वोकेशनल नॉलेज, बेटर कोर्स अलाइनमेंट विद, हमें उसकी यथार्थता को व्यापक बनाना होगा। अगर हम किसी स्किल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्किल कितना उपयोगी है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगा, उसकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए देगा, उसकी पर्सनैलिटी में एक निखार देगा, उसको एक एटीट्यूड भी देगा, उसको एक टेम्परामेंट देगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ उसको एक पॉजिटिव आउटलुक देगा। यहाँ पे जब लर्नर को फायदा ज्यादा दिखता है, उसको उसमें आनंद ज्यादा दिखता है, तब वो उसकी तरफ उसका रुझान बढ़ता है। अगर उसको वो डिफिकल्ट लग रहा है, ये बहुत ज्यादा माथापच्ची वाला काम है, इसमें तो बहुत सारी चीजें रूटीन है, तो शायद वो उस स्किल की तरफ ना जाए। तो ये हमें इंटरेस्टिंग बनाना या फिर उसको एनहेंस करना, अपने कंटेंट को एनहेंस करना, जिसको हम कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली। आप याद कीजिए, जब आप पहली बार कंप्यूटर पे बैठे होंगे और आज जब आप कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, फिर आज आप स्मार्टफोन्स को हैंडल करते हो, तो शायद हमें मैनुअल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जाते हम मैनुअल की तरफ? क्योंकि जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं वो इतना यूजर फ्रेंडली होता है कि आप शायद 1-2 दिन में उसके इन एंड आउट से वाकिफ हो जाते हो। तो वो उतना इंटीग्रेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है आपसे, ताकि लर्नर को चैलेंज ना लगे। किसी भी स्मार्टफोन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? कि वो यूजर कंफर्टेबल है कि नहीं उसको यूज करने की। द मोमेंट एक स्मार्टफोन आता है जिसमें बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल तकलीफें लगने लगती हैं, आप उसको यूज नहीं करते हो, रादर आप मोबाइल को चेंज करते हो या स्मार्टफोन को चेंज करते हो। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमें मेन स्ट्रीम में लाना है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा, करिकुलम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, और वो करते हुए वो इंटीग्रेटेड कैसे हो रहा है, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में इंटीग्रेटेड कैसे हो रहा है, उस हिसाब में। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की बात करें तो, अगर हिस्ट्री में है तो अगर आप उनको एक गाइड बनाना है, आपको गाइड का स्किल देना है, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा उसकी वोकेबलरी कैसे डेवलप हो रही है, वो कैसे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सब चीजें हार्ड स्किल्स के ऊपर नहीं है। हम बहुत बार स्किल डेवलपमेंट को सिर्फ हार्ड स्किल से बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉफ्ट स्किल्स पे भी डिपेंड करती हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, आप किस हिसाब से लोगों से बात करते हो, उन पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्किल्स में अनुमन रह जाती हैं। लेकिन एनईपी इस बार उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बात कर रहा है, उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी उतना ही ज्यादा महत्व दे रहा है जो पहले इतना ज्यादा नहीं दिया गया था। तीसरी जो एस्पेक्ट है वो डेवलपिंग वर्क प्लेस रिलेटेड स्किल्स एंड एटीट्यूड।
वर्क प्लेस पे, हर एक वर्क प्लेस पे एक अलग जिसको कह सकते हैं स्किल लगता है, और उसके लिए एटीट्यूड अलग लगता है, ताकि आप लोग इंटर्नशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर सकें। ये बहुत बड़ा क्या दे सकते हैं इंटर्नशिप, मैंने जैसे पहले भी कहा, इंटर्नशिप कब सक्सेस होगी, जब मैं जो क्लासरूम में सीख रहा हूँ, मेरे लेक्चर रूम में जो सीख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं वो थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल में होते हुए देख रहा हूँ, रियलिटी मैं उसको अप्लाइड होते हुए देख रहा हूँ, तब वो जाके अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल में ज्यादा यूज कर पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम शायद क्लासरूम में सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाती हैं हम जब इंटर्नशिप में जाते हैं। तो ये ऑन द जॉब वी आर सपोज टू सर्च फॉर द इंस्टीट्यूशंस those who are providing first hand on the job training. Like for psychology, it's a purely humanitic subject. If somebody has to go through an internship, and that internship is going to be minimum for 3 months, maximum for 6 months, if you're talking about hands-on experience, that means that the learner has to go and work with a setup. Now, the setup is maybe a setup of a psychiatrist, maybe a setup of a hospital, maybe a setup of a rehabilitation center, maybe a de-addiction center, maybe working with an NGO, where the learner can actually use whatever he or she has learned in the classroom, and he or she is able to successfully implement in the practical life solutions, humanities. So, can we integrate? Can we bring that skill related to that when we talk about counseling? If I'm talking about MA in psychology, counseling becomes a very predominant area for skill enhancement or skill development as such. So, can we prepare modules where the modules can be taken up and the child or the learner is implementing in the setup? Maybe a premarital counseling, maybe a vocational counseling, maybe adjustment, maybe career counseling. There are many, many, many domains where the child learner can go and do it. So, हमें वर्कप्लेस रिलेटेड स्किल्स, एटीट्यूड्स किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग? इंटर्नशिप के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग? ऑन द जॉब दे सकते हैं, मतलब जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग ना। इधर क्या होगा कि हमें सुपरवाइजर्स लगते हैं, हमें एक्सपर्ट्स लगते हैं, जो हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज में मिल सकते हैं, लेकिन यस, वी अमंग द फैकल्टीज आल्सो डू हैव, most of the teachers are being well versed with the soft skills. Okay, University of Pune, elsewhere University of Pune has conducted 10 days workshop for enhancing soft skills for the teachers. Train the trainers concepts have been given. How to face interviews, how to conduct interviews. Many, many topics were being taken at that point of a time. Same thing can be done over here also. Then we can do introduction to vocational interest inventory in the grade 8 and skill-based aptitude test in grade 10 for the guidance of the students in making informed career choices. Now, the moment I'm saying हम उनके एप्टीट्यूड अर्लियर ले सकते हैं क्या? स्कूल में ही जब बच्चा 10वीं करके बाहर निकल रहा है, महाराष्ट्र में कल चाचनी बोलते हैं उसको, कि उसका उसमें कौन सा पोटेंशियल है, वो एक रफली एक आइडिया बच्चे को जरूर आ जाती है। जब वो 10th स्टैंडर्ड से बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि मेरा जो स्किल है, मेरा जो एप्टीट्यूड है, वो इस एरिया में है, ताकि वो उस एरिया को और जाके सर्च करे, उस एरिया पे ज्यादा काम करे, और उसके इंक्लिनेशन के हिसाब से जाके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को वो आगे ज्वाइन कर सके, जूनियर कॉलेज हो, उस हिसाब से। तो ग्रेड 10th के बाद में स्टूडेंट्स को उनकी इन्फ्लुएंसेस मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इनसाइट्स कह सकते हैं हम उसको, कि क्या इनसाइट है, मेरे में कौन सा पोटेंशियल है। बहुत बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनमें किस चीज की क्षमता है, और शिक्षक जरूर बताते हैं वो क्षमता, नो डाउट। अगर हमें कुछ ऐसे
टेस्ट्स मिल जाएं, ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज मिल जाएं, जिसके माध्यम से ये पता चले कि इसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज्यादा इसमें है, इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसमें क्या कह सकते हैं आपको ज्यादा है, मैनेजरियल स्किल ज्यादा है, या फिर कुछ और है, तो शायद उसकी जो उसको चाहिए हम उसको पहले दे पाए, ताकि वो जब आता है या फिर कॉलेज को जब वो ज्वाइन करता है, क्या करना है इसकी ज्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं उसमें महारत हासिल कर सकूं. Ensuring that qualifications are relevant to perceived social and economic standards or needs. कई बार ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशंस और स्किल्स मैच नहीं तीसरा डिग्री है, चौथा है, तो उसके हिसाब से चलेगा. ठीक है. ये करते हुए समाज उसकी तरफ कैसे देख रहा है, समाज का दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में, एक्सेप्टेबल उस क्वालिफिकेशन को कितनी के national occupational standards to be defined, be agreed, learning outcomes and applied consistently across all institutions. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स उसको डिफाइन करना होगा, उसको हमें कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना होगा, फाइन ट्यून करना होगा, उसमें यूनिवर्सलिटी लानी होगी, उसमें एक वाक्यता लानी होगी, ताकि जहां पे भी उसको हम लोग डाल रहे हैं या फिर उसकी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली एक ही तरीके की हो, एक ही जैसी हो, उसमें विरोधाभास ना हो. तो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स जिसको कह सकते हैं वो हमें डेवलप करने पड़ेंगे, या फिर हम जो बनाए हैं, निर्धारित किए हुए हैं, उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर हम बढ़ा पाए तो मुझे लगता है कि काफी लंबा और काफी बड़ा काम हम उस पर कर सकेंगे. और क्या कर सकते हैं हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, फोकस ऑन गुड प्रैक्टिस एंड इनोवेशन बाय टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग. हर एक इंस्टीट्यूट की, आप सबको मालूम है, नैक जब भी पीयर टीम आपके यहाँ पे विजिट करती है तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस को ओवर द ईयर्स काम कर रहे हो, जिसने आपको रिजल्ट्स दिए हैं, जिससे आपको आउटकम्स मिले हैं. तो फोकस करना होगा गुड प्रैक्टिसेस पे. क्या हो सकता है गुड प्रैक्टिस, कि हमारे इधर जब बच्चा फाइनल ईयर में आता है तब हम उसको इंटर्नशिप पे भेजते हैं, हमारे इधर जब बच्चा फोर्थ ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है हम उसको सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग देते हैं, हमारे इधर जब बच्चा आता है तो हम उसको अंडर मेंटरिंग रखते हैं. ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत सारे कॉलेजेस करते आए हैं, करते रहे हैं. कुछ एनईपी तक का इंतजार जिन्होंने नहीं किया है वो तब भी इंटर्नशिप देते थे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी जाती थी, मेंटरिंग हुआ करती थी. बच्चा अंडर ग्रेजुएट में भी अपने टीचर की मेंटरशिप में सीखता है. ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको हमें प्रोपोगेट करना होगा, इन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में लाना होगा, फोकस्ड करना होगा, ताकि ये गुड प्रैक्टिसेस हैं जो इनोवेशंस हैं ये टीचिंग लर्निंग में और ज्यादा अमल में लाई जा सके, ताकि हम इसे मेन स्ट्रीम में ला पाए. इंश्योरिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप एंड फंडिंग बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं एक चैलेंज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि हम पार्टनरशिप्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन इसमें कैसे ले सकते हैं. काफी इंस्टीट्यूट्स ने उसमें काफी काम भी ज्यादा किया है, कि जिन्होंने इंडस्ट्रीज को साथ में लाया है एकेडमिक्स के साथ में, और जब वो यूटिलिटी पता चलती है, जब उसकी आउटकम दिखने लगते हैं, तो हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने में शायद ज्यादा अच्छी तरह से कामयाब हो. तो इंडस्ट्रीज को लाना होगा. कई जगह पे जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसका खुद का एक रिमार्केबल अचीवमेंट्स है इन द पास्ट,
चाहे वो सोशल सर्विस करने की बात हो, चाहे वो कोई भी डेमोग्राफी के बारे में स्टडी करने की बात हो, या फिर कोई पॉलिसी किसी के बारे में लिया जाता है, तो हम किसकी तरफ देखते हैं? बहुत बार हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहां पे सोशली, या फिर जो जिसको कह सकते हैं कि अंडर करंट्स क्या है, परसेप्शंस क्या चल रहा है, समाज कौन सा दृष्टिकोण लेके चल रहा है, तो काफी ज्यादा रिसर्चेस जिसको कहते हैं सोशल साइंसेज में वहां पे होती हैं। तो क्या ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी कहीं कुछ हम लोग कोलैबोरेटिवली कर सकते हैं? देयर आर एन नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, आई हैव जस्ट टेकन द नेम ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, लेकिन काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफी सीरियस काम करते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज के साथ में, कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ में कुछ कोलैबोरेशन कर पाए, और वो कोलैबोरेशन काफी ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि मदद कर सकता है हमें एनईपी 2020 के टारगेट्स को लेके चलने में। उसके बाद में है, और जिसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, इंट्रोड्यूसिंग लोक विद्या, which is like indigenous knowledge and skill in schools through vocational education. लोक विद्या को लेके जाना है। अब ये भी एक कंसर्न है, या फिर ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को कि लोकल जो हमारा नॉलेज है या फिर वोकेशनल जो हमारे एजुकेशन है उसको हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो पहली और फॉरमोस्ट चीज जो हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग लोकल वोकेशनल क्राफ्ट्स, कौन से हैं, कौन सी कलाकृतियां हैं, कौन सी जो लोकल इसमें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स ऑन इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी लोक कलाएं या फिर लोकल स्किल्स जिनको कह सकते हैं, वो आज हाशिए पे जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर विलुप्त होते हुए दिख रहे हैं। शायद हम ऐसा कहें कि ये ऐसा हुआ करता था, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था, इस प्रकार की एक स्किल हुआ करता था। आज हमें वो स्किल्स बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड वे में या फिर टेक्नोलॉजी हमें देखने लगे हैं। तो लोग, तो वो एक काम हम जरूर कर सकते हैं अगर हम लोग लोक विद्या के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा संबंध लोकल स्किल से है, जिसको कह सकते हैं कि स्थानिक जो कलाएं हैं या फिर कला गुणों से संबंधित रखता है, उसके बारे में हमें कुछ कॉन्शियसली ढूंढना होगा, समझना होगा कि इस गांव में, इस तबके में, इस तालुका में कौन से लोकल स्किल्स हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड एनएसएफक्यू के माध्यम से ये किया जा चुका है, उनकी भी मदद ली जा सकती है, जहाँ पे लोकल स्किल्स की बात की जा रही है, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाती है, जहाँ पे क्राफ्ट्स की बात की जाती है। राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा में, आप सुदूर अगर हम लोग पूर्वांचल में चले जाएं, सिक्किम, सिलीगुड़ी, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे हर एक, अगर मैं कहूंगा कि मैं क्यों किसी स्पेसिफिक राज्य की बात कर रहा हूँ, हर एक राज्य, हर एक जिले में स्किल्स हैं, लोकल स्किल्स हैं, जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये क्यों आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में उसके ऊपर काम करना जरूरी होता है? क्योंकि ये हमें अपने लगते हैं, इनसे कनेक्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं। शायद हमने उनके ऊपर उस नजर से देखा ना हो, लेकिन हम जब उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्किल अपना लगता है, और जो चीज अपनी लगती है उसको ग्रास्प करने में, उस पर काम करने में एक अलग आनंद होता है, और उसकी एक अपनी एक स्पीड होती है, उसमें उतनी ज्यादा एक्यूरेसी भी होते हुए हमें दिखती है। तो वो जो एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को कनेक्ट होता है, लर्नर को कनेक्ट होता है, जब वो अपना लगता है। और वो लोकल स्किल की बात की जा रही है, लोक विद्या के माध्यम से बात की जा रही है, और इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस से मतलब इम्पोर्टेड नहीं है, वो हमारे ही किसी एक तालुका की है, हमारे ही एक जिले की है, जिसे हमें अभी एनरिच करना है और उसका संवर्धन करना है हमें। और वो जब लोकल रहेगा तो शायद लर्नर उसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए। आइडेंटिफाइंग लोकल एक्सपर्ट्स, अब आपने ये तो देख लिया कि कौन सा क्राफ्ट है, लेकिन उस क्राफ्ट पे काम करने वाले कोई लोकल एक्सपर्ट्स हैं क्या? क्योंकि पता चले कि वो क्राफ्ट के साथ में वो व्यक्ति भी विलुप्त होते जा रहा है, एक्सपर्ट्स अभी नहीं रहते हैं।
बहुत सारी भाषाओं के बारे में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे कलाओं के बारे में ऐसा हो रहा है, क्राफ्ट्स के बारे में ऐसा हो रहा है कि अब ये हमें वो लोग मिलते नहीं है। देखिए कि पुरातन बनाई गई मंदिरों की मूर्ति हो या फिर आर्किटेक्चर हो, उस लेवल का आर्किटेक्चर आज हमें लोकल लेवल पे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका संवर्धन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं हुआ है, और आज वो एक्सपर्ट्स भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने किसी कला को ढूंढा, क्राफ्टमैनशिप को ढूंढा, तो उसके ऊपर कौन लोकल एक्सपर्ट्स हैं और उनकी हम कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स या फिर ट्रेनिंग्स बच्चों के लिए लगा सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ी एक, जिसको कह सकते हैं कि वे आउट हो सकता है, जिसको कह सकते हैं कि हमें लोक विद्या के ऊपर काम करना है। तो लोक विद्या पे काम कौन कर सकता है? लोकल एक्सपर्ट्स ज्यादा काम कर सकते हैं। बीच में मैं काफी स्कूल्स में जब घूमता हूँ तो मुझे दिखा है कि बहुत सारे स्कूल्स आज लोक विद्या पे काफी काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉटरी मेकिंग हो या पेंटिंग हो या फिर ड्राइंग हो, जो विलोप होती जा रहे हैं, जिनके ऊपर अभी हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि ये हुआ करती थी हमारे इधर, ऐसे ऐसे प्रकार की एक कला हुआ करती थी, अब तो नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि उसको उसको हमने आगे ले नहीं जा पाए, उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाए हैं। उसका एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि जरूर रह गई, लेकिन हम उसको कल्टीवेट नहीं कर पाए, उसको आगे नहीं लेके जा पाए। तो एक एस्पेक्ट है कि जहां पे आपने स्किल को आइडेंटिफाई किया है, क्राफ्ट को आइडेंटिफाई किया है, वैसे ही हमें कुछ एक्सपर्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो आइडेंटिफाई होने के बाद में उनके साथ में बच्चों की इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो। वो 8 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है। अभी तो आपको मालूम है कि घंटों में हो गया है, 120 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स आप इंडिजिनियसली रन कर सकते हो। वो एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपनी खुद की कॉलेज की, कि हम इस इस स्किल को जो बहुत ज्यादा हाशिए पे चले जा रहा था, जो विलुप्त होने की कगार पे था, हम उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। और जब ये लोकल रहता है, मैंने जैसे पहले कहा, कि हम अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं उस हिसाब से। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं इस लोक विद्या को या फिर इंडिजीनियस नॉलेज को बचाने के लिए, स्किल को बचाने के लिए, हम कम्युनिटी एंड इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? जो कम्युनिटी उसको स्किल को दे रही है, तो उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल करके दे सकते हैं क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल आप मॉल्स में जाते होंगे, मल्टीप्लेक्सेस में जाते होंगे, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाए गए होते हैं, बचत गट के माध्यम से बनाए होते हैं, जो आज स्किल ऑलमोस्ट नहीं रहा है। उसको जब हम आप एग्जिबिट होते हुए एक बड़े फोरम में देखते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो हमें उसको खरीदने की एक इच्छा होती है कि नहीं, इसको लिया जाए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि कम्युनिटी और इंडस्ट्री का कुछ हम पार्टनरशिप कर पाए, जोड़ पाए उनको, ताकि उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वायबिलिटी दिखे, एक प्रोग्रेस दिखे, एक जिसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट दिखे। तब जाके, कई बार ऐसा होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे कुछ बिजनेस मिलने वाला है, या फिर मुझे इसमें कुछ एम्पावरमेंट होगी, मुझे इससे कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो यस, अगर हम किसी पार्टनर को ले पाए, किसी इंडस्ट्रियल पार्टनर को साथ में ले सकें, तो वोकेशनल एक्सपोजर मिलेगा थ्रू इनफॉर्मल एंड थ्रू फॉर्मल इंटर्नशिप ऑल्सो। कुछ इंडस्ट्रीज डेफिनेटली अडॉप्ट करती हैं ऐसे स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो हमें वैसा कुछ एक्सपोज करना पड़ेगा, या एक्सपोज करने से ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा, एक्सप्लोर करना होगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इन चीजों की तरफ ध्यान दे सकती हैं, और वो भारत की जो धरोहर है, जिसको हम लोक विद्या कह रहे हैं, उसमें वो पार्टनरशिप बने। तो एक काफी पाथ ब्रेकिंग काम हो सकता है वोकेशनल स्किल्स को, जिसको कह सकते हैं कि हमें एनहांसमेंट करने के लिए, या फिर जो एक थॉट प्रोसेस है कि वोकेशंस में क्या रखा है। हमें तो टिपिकल डिग्री लेके अपने इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर ये बनना है, लेकिन हाँ, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसके लिए हमें उस तरीके की इंडस्ट्रीज जो इस चीज के लिए आगे आए और वो उस पर कोलैबोरेट करें, एक्सपोजर दें, और उस एक्सपोजर के माध्यम से कुछ इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बने, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम बने। और वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने आज आप देखेंगे तो भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है।
और एक अच्छा खासा जिनको कह सकते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट को भी एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं कि हम योगदान होते हुए थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमको दिख रहा है। बात का एक जो कंसर्न है वो है फैसिलिटेटिंग हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ वोकेशनल स्टूडेंट्स इन स्कूल। ये कैसे होगी? फैसिलिटेट करना है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल जाना है, और उस जाते हुए वोकेशनल स्टूडेंट्स के स्कूल्स में कैसे उसको हम लोग ये कर पाएंगे? कोलैबोरेटिंग विद, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईआईटीज के माध्यम से कोलैबोरेट करना। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ आईआईटीज ने, कुछ इंडस्ट्रीज ने ही आईआईटीज को अडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जब आईआईटीज के बंदे आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, बताते हैं, तो एक जिसको कह सकते हैं कि वो वातावरण निर्माण हो सकता है। पॉलिटेक्निक के लोग आते हैं, लोकल बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर फार्म्स, local you may say artists and NGO through hub, and through they are imparting the staff training. कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम बहुत अच्छी तरीके से, और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ा योगदान जिनका हो सकता है वो कॉलेज के एलुमनाइज का हो सकता है, जो स्कूल से या फिर कॉलेज से बाहर जाने के बाद में उन्होंने कौन से स्किल्स को लिया है, या फिर कौन से स्किल्स को वो साथ में लेके चल रहे हैं। मिस्टर प्रतीक मिलिंद जादव, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? आपने हाथ ऊपर किया इसलिए मैंने आपको पूछा। ओके, तो इंडस्ट्रीज का कैसे कोलैबोरेशन किया जा सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का कैसे कोलैबोरेशन किया जा सकता है, पॉलिटेक्निक्स का, लोकल बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, जहां जहां पे ये मोबिलिटी की शक्यता है, जहां जहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोबिलाइज कर सकते हैं, बेसिकली नर्सिंग कोर्सेज, बेसिकली इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बेसिकली जिनको कह सकते हैं कि प्राइमरीली इन द स्टैंडर्ड 10th, ये मोबिलिटी के बारे में हम लोग इंटरफेसेस रख सकते हैं। मैंने एलुमनाई का कहीं जिक्र किया कि एलुमनाई भी काफी लंबी और काफी अच्छी भूमिका अदा कर सकता है इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने में, कि यस, हम स्कूल में रहते हुए या फिर कॉलेज में रहते हुए हमने ये स्किल जब लिया था तो उसका हमें हमारे जॉब पे या फिर हमारे इधर कितना ज्यादा यूज हुआ। तो एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी निश्चित तरीके से हमें मदद कर सकती है। फिर है कि इंटीग्रेटिंग न्यू एज स्किल्स इन 21st सेंचुरी, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन एजुकेशन इन स्कूल्स। इंटीग्रेटिंग न्यू एज स्किल्स, इनको कैसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एट ऑल स्टेजेस इन स्कूल एजुकेशन। हम जब शुरू से कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्किल्स को एम्प्लॉयबिलिटी की जोड़ देनी होगी। जब तक ये ना दिखे मैंने जो स्किल लिया है, या फिर मैंने मल्टीपल स्किल्स को सीखा है, या फिर आत्मग्रहण किया है, या फिर मैंने समझा है, मैं कर पा रहा हूं, उसकी यथार्थता क्या हो रही है, उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, वो अनयूटिलाइज तो नहीं जा रहा है ना, उसका कुछ यूज ही नहीं अगर मुझे हो रहा है, तो शायद मैं उसकी तरफ मेरा रुझान ना रहे। लेकिन मुझे क्या करना होगा? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के साथ में एट एट ऑल द स्टेजेस ऑफ माई स्कूल एंड द कॉलेज लर्निंग। अगर मैं वो कर पाया तो शायद, यस, मैं 21st सेंचुरी के जो स्किल्स की बात कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ इन स्कूल्स में, तो शायद मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन अगर वही चीज हो कि मैं जो स्किल इम्पार्ट कर रहा हूं, मैं जो स्किल ले रहा हूं, वो मुझे खुद को कोई एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद नहीं कर रहा है, या फिर वो मुझे किसी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए मदद नहीं कर रहा है, मुझे उससे कुछ जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर मैं उनसे अपने आप को जॉब की तलाश में अपने आप को कम महसूस कर पा रहा हूँ, कि जो स्किल मैंने लिया वो मुझे उतना ज्यादा उपयोगी नहीं हो पा रहा है। दिस अ पॉसिबिलिटी। तो हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपने जो स्किल लिया है उसका उतना ही मार्केट में डिमांड है, आपके स्किल्स को रिफाइन किया है, और उस हिसाब से आप वोकेशनल स्किल्स को लेके, ट्रेनिंग लेके
आप जॉब को कनेक्ट हो पा रहे हो. इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. और इस चैलेंज को कम करने के लिए सबसे बड़ी बात अगर हम लोग कर सकते हैं, हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो डिजाइन है, हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम जो कर पा रहे हैं, वो कितनी ज्यादा मार्केट ड्रिवन है, वो कितनी ज्यादा मार्केट को चाहिए, वो कितनी ज्यादा मार्केट के डिमांड में है. हम एक स्टेप फॉरवर्ड हैं या हम एक स्टेप बैकवर्ड हैं. हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं इंडस्ट्रीज की डिमांड को, हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सिलेबसेस, हमारे करिकुलम उतने फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होते हैं, या फिर वो उतने एडवांटेज पे नहीं रहते हैं जितने इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट करती है. बहुत बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज बहुत बार ऐसे कहती है कि हमें उनको फिर से 6 मंथ्स ट्रेनिंग पे रखना पड़ता है, हमें फिर से उनके स्किल्स का, और या फिर जो गैप है उनके स्किल्स में, और जो मार्केट कंपनी जो मांगती है उसको फिल करने के लिए हमें 6-6 महीने जाते हैं. तो हम करिकुलम वैसा बना सकते हैं क्या? इसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज की भूमिका काफी महत्व की रहेगी, इसमें एकेडमिक काउंसिल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्व की रहेगी, क्योंकि ये बॉडीज हैं जो सिलेबस को रिकंस्ट्रक्ट करती हैं या फिर रिवाइज करती हैं. शायद हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस अभी 5 साल के बाद बदलेगा. क्या हम उस मोड में जा सकते हैं कि वो नीड बेस्ड ऑफ द लर्नर बने, कि हमें नहीं, हमें चेंज करना है, हमें उसको 3 साल में चेंज करना होगा, हमें साल भर में चेंज करना होगा. काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके करिकुलम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ड्रिवन होते हैं या फिर सोसाइटी ड्रिवन होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सोशल साइंसेज की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज की बातें कर रहे हैं, तो वो सोसाइटियल ड्रिवन भी होने चाहिए. बहुत ज्यादा गैप ना रह जाए. बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है इंडस्ट्रीज की डिमांड्स अलग होती हैं और हम जो दे रहे हैं वो मैच नहीं कर पाते हैं, और फिर वो अनइजीनेस आना, फिर वो इनजस्टिस लगना कि हमें वो नहीं मिल पाया जो हमने अपनी 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री में हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री हैज गॉन अप. द challenges are more now. So can we prepare a curriculum? Can we prepare a structure? Can we prepare a framework where the learner is very much at par with the requirement of the industry? We may not be at par. I would like to say, are we ahead than what the industry is asking for? Because nowadays transfer of technology has become very easy. What is happening in America can happen very much in the manufacturing sector in India. What is happening in Germany can very much happen in India. What is happening in any part of the world can very much happen in India. We have never given a thought that we will be making Apple in India, and Apple 15, whatever series it might be, is prepared in India in a Bangalore-based industry. So technology transfers are not any hindrances nowadays. Technology is going to come very easy. But whether my, you may say, curriculum is designed as per the demand of the industry. If it is demand as per the demand of the industry, yes, students are going to be most welcomed by the industries. If it is mismatching, probably then we have a different challenge. So to overcome this challenge of integrating new age skill 21st century, we are supposed to update our syllabus time and again, because now we cannot keep gap. If we are keeping more gap, probably our students will be the losers. Industries will have, because we have such a big youth, okay, employer, unemployed, employed, both employable, I would be using the word. But whether the two industries need that set of skills, probably they may not. And when they don't need, we are supposed to create courses after courses, maybe short-term courses, which does not need a proper, what we can say, regulations to go. Colleges can have hands-on experience courses, autonomous courses, because at times it is the knowledge which is being checked. At the time, what you possess is being checked. So from a rigid university syllabus, colleges can go for
some courses designed by themselves, which are very much pro what the industry is asking for. And that, I think, in technical, it's very easy to know because they have campus interviews, they know what the industry is demanding or what they are looking for. Probably it can go miles. Probably it can make a sea change in the gap which we nowadays are having. Yes, I have seen many progressive universities, forward-looking universities, those who keep on changing their syllabus from time to time so that they are updated, so they are able to match up with the demand of the industry. So that 21st century skills can be definitely taken care when we are introducing changes in our syllabus rather than not bringing any change in the syllabus from years together. Introducing vocational courses on the new and emerging skills demand of the industries. Industry is forward looking. Industry is asking for so many new things from the curriculum, from us as an educator, from the academician. Are we ready? It may be such as artificial intelligence. Today, artificial intelligence is in a greater demand. Students are doing BE in artificial intelligence. Say about 10 years back, nobody has given a thought. There was a thought, no doubt about it. But can we have a specialized degree in artificial intelligence? Why universities have came up with artificial intelligence degree? Because that was the demand of this industry. That is what the industry is looking for. What is that the industry is asking? So we have designed artificial intelligence courses. Private universities and autonomous institutions huge technological breakthrough where doctors are being assisted by the robots to perform surgeries, or in some cases, robots are performing the surgeries. So, robotics, and this is being taken care even in the adult drinking labs, in incubation centers, in the school setups, even now. We have seen it out in the last 5, 7 years, where adult drinking labs, where artificial intelligence is not that way significant, which has been taken care in the colleges, but somewhere robotics are being equally taken care at school level also. How to program robots, how to take help, because it is going to reduce labels, it is going to reduce the physical fatigue, no doubt about it. But that's the demand of the industry. So robotics, you can have, will be introduced in the enterprise education, should be, as we know, national education policy for the schools started working on coding, decoding. There are many, you may say, changes which we have seen in the school curriculum also. So that innovation, that thought process has initiated from the grade six, because somewhere the NEP is talking about skill development as early as in sixth grade. And they're grading it well. They are grading it with modules, module for sixth standard, module for seven. Refinement is being seen into it. Even if the same skill, if the child wants to carry, but there is going to be a progressive learning in sixth standard, seventh standard, eighth standard, ninth standard, and 10th standard. So that progressive learning is going to make a huge impact in bringing that 21st century new skills, which we are looking forward in our schools and our colleges and our universities. Over here, we are going to take another conscious break. It's like 4:30 now. We are going to take another conscious break, and let it be, because in between I used to receive a message, there is no voice. There is no voice because I'm not speaking at all. Okay. So that's why there is no voice. And if there is no screen, because I'm not on the screen that way. So we'll be taking a 5 minutes break once again. It's almost 4:30 at this point of a time. We are going to meet at 4:35 again. And by 5:15, I will be winding up this, and last 5 or 10 minutes or whatever time we get, we'll be going to keep for an open forum discussion, questions and answers. And I would like to have what I would like to say, a very conscious break right now. So see you at 4:30, 4:35, sorry.
राजी खत्म हुआ है कि ये? ब्रेक है मैडम, अभी आएंगे सर पार्ट। Just I am calling the resource person. Kindly wait. He got disconnected. So within 5 minutes, sir will join. No problem. All of you be patient. Yes, we are back. Okay. Yes. 4:35 हो चुके. We are back. आवाज सुनाई दे रही है आपको सबको मेरी? यस सर, Clear? यस सर। So next what? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को साथ में लेते हुए
इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है उनको लेते हुए साथ में चलना होगा। अगर हम वो कर पाए तो यस, हम लोग 21st सेंचुरी के स्किल्स को भी कर पाएंगे। उसके बाद में प्रमोटिंग ऑनलाइन एंड ओपन वोकेशनल एजुकेशन। आज बहुत बड़ा चैलेंज है प्रमोटिंग ऑनलाइन एंड ओपन वोकेशनल एजुकेशन। हम अभी जिस माध्यम में हैं पूरी तरह से ऑनलाइन है आज। इंट्रोड्यूसिंग न्यू लर्निंग मेथड्स, डिजिटल टूल्स लाइक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको हम लोग कह सकते मोक जिसको कहते हैं हम लोग, फ्लिप लर्निंग, virtual learning methods will be used. Nowadays, it's very common to use even what I would say hybrid modes of education. Okay, it is going in a very long way. हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग है कि आज हम लोग हाइब्रिड मोड्स के ऊपर भी बैठते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड बहुत ज्यादा जिसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो यस, कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करना होगा ऑनलाइन एजुकेशन को भी। ऑफलाइन तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन को भी कर सकें तो सबसे बड़ी देन अगर पैंडेमिक की कुछ है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन की। और हम उसको काफी ज्यादा उसके ऊपर काम अभी भी करना बाकी है, और कुछ स्टेट्स ने ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज भी शुरू की हैं ताकि उससे भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। टेक्नोलॉजी के साथ जरूर लगेगी, क्योंकि हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का आज हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज देखो किसी का एक कमेंट था कि नगर में कहीं पे बारिश हो रही है तो उसको उतना कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो हमें काफी ज्यादा 5G मोड या फिर उसके आगे जाके जिसका बैंडविड्थ अच्छा मिले उस हिसाब से हमें अपने आप को इक्विप होना होगा। और उस हिसाब से अगर हम कहें तो हायर एजुकेशन को एक टर्निंग पॉइंट हाइब्रिड के माध्यम से जरूर मिल सकता है। अगला जो चैलेंज है, और वो चैलेंज हमें जो दिखता है, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ होलिस्टिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है किसी का माइक चालू है, अगर वो माइक बंद करे तो हमें उतनी नॉइस ना आए। किसका आवाज चालू है मुझे मालूम नहीं, आई कैन नॉट सी इट फ्रॉम हियर, लेकिन जिसका आवाज शुरू है मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट करें या फिर सर मैं म्यूट कर दिया हूँ सबको। और ओके। मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स में भी चेंज कर देता हूँ। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, सवाल पूछने हैं, तो आप रेज हैंड करिए। और सर आपको आप अनम्यूट करना है, जिसने हैंड रेज किया उनको सर। ओके ओके ओके, कर देंगे उसे। तो डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ होलिस्टिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये भी एक चैलेंज है कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे या फिर उसको असेस करेंगे। तो एक चैलेंज है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। उसमें हो सकता है कंडक्ट इंटरेस्ट असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट टू मेजर स्पेशल एबिलिटीज और रेडीनेस फॉर लर्निंग इन वेरियस वोकेशनल एरियाज। बहुत जगह पे जिसको हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है, इंटरेस्ट का असेसमेंट हो रहा है कि बच्चे का, लर्नर का किस में इंटरेस्ट है। किस में इंटरेस्ट होना बात अलग है और एप्टीट्यूड होना बात अलग है। हमारा इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन शायद हमारा उसमें एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो एप्टीट्यूड जिसको कह सकते हैं कि वो एक बेसिक पोटेंशियलिटी है जिसको समझना और जानना। तो वो कौन सी है, तो वो उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट्स की मदद आप जरूर ले सकते हैं। और काफी बड़ी मात्राओं में आज साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से हम लर्नर का इंटरेस्ट को भी जान सकते हैं, उनके एप्टीट्यूड को भी जान सकते हैं, और फिर उसको चैनलाइज कर सकते हैं कि उसने कौन से स्किल की तरफ जाना चाहिए। तो एप्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं, स्पेशल एबिलिटीज मेजर करें, और रेडीनेस फॉर लर्निंग फॉर वेरियस वोकेशनल एरियाज। हमें बच्चों को चॉइसेस देनी होगी, हमें रिस्ट्रेन नहीं करना है या फिर हमें लिमिटेड चॉइसेस नहीं दे रही हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे बाय 2035, अगर ये सब एज पर चलता रहा, टाइम फ्रेम में चलता रहा, तो 2035 में हम लोग क्लस्टर्स की तरफ मूव कर चुके होंगे, हम लोग हब्स की तरफ मूव कर चुके होंगे, हम लोग क्लस्टर यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव कर चुके होंगे। हम लोग काफी ज्यादा, जो आज हम मर्यादित
1000 या 1100 यूनिवर्सिटीज में हैं, कल जाके with this speed and with this you may say progression, we may land up with 1500 universities, maybe more than universities, okay? Because the projection is that every district must have one university minimum. Every talukas in the future will have one university. So if you go by the number of talukas and the number of districts, pan India probably will have many universities coming into it. So the moment we say about vocational centers, the vocational areas, universities need to give, colleges need to give them more choices, more options for the skill. It can go with the local Dhyan itself. Measuring the achievements of learning outcomes through various tools and methods such as checklist, group work, peer assessment, worksheet, presentation, students' portfolio, from 360-degree assessment and evaluation of the student. There can be many means through which the child or the learner's performance can be measured, or the achievement can be measured. The first and the foremost is through the outcome, because since we are into skill development, if you have given a task, what is the outcome? What quality outcome the learner has given? What precision it has came? What is the rate of the scrap if you're talking about something which where the learner is making through something, you may say, some material, or he is using some material. What is the rate of the scrap which has gone waste? The lesser the scrap, better the, you can say, outcome. But the outcome also needs to have the clarity, needs to have the precision, needs to have the proper tools to measure it. So can we have a checklist? If a particular task is to be completed, skill has to be learned, these are the minimum things which the learner has to do. Whether the learner has done the minimum 8 things, 10 things out of 12 which were required, based on that the grading can be given. Group work, whether the person is able to perform the task in group, वो अकेले में ही कर रहा है या फिर ग्रुप में भी कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी ग्रुप में बढ़ रही है, कम हो रही है, वो अकेला ज्यादा काम करने में खुश रह रहा है या फिर ग्रुप के साथ में, तो ग्रुप्स में उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, पीयर्स में कैसा होता है, पीयर्स उसको कैसे असिस्ट करते हैं, या फिर उसका पीयर्स असेसमेंट कैसा कर रहे हैं कि नहीं ये टीम का बंदा नहीं है, ये टीम में नहीं काम कर पाता है, ये इंडिविजुअली अच्छा कर पा रहा है, लेकिन उसका पीयर असेसमेंट जो है, मेरे सहकारी मेरा परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं, अच्छा रेट करते हैं, बुरा रेट करते हैं, एग्जेम्पलरी रेट करते हैं, या फिर बहुत ही बुरा रेट करते हैं, क्या कैसे रेट करते हैं, वो भी मैटर कर सकता है, वो भी एक टेक्निक हो सकती है। वर्कशीट्स एज ऑलवेज, हम तो बहुत कन्वेंशनली वर्कशीट्स के ऊपर काम करते हुए देखते हैं कि कुछ भी एक्टिविटी है वो लर्नर वर्कशीट्स पे कैसे उसको उतार रहा है या फिर दे रहा है या फिर उसको प्रेजेंट कर रहा है। वर्कशीट्स कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। यस, प्रेजेंटेशंस, नो डाउट अबाउट इट, लाइक ओपन डिफेंसेस रखे जा सकते हैं, तो जहां पे उस डोमेन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स, उस डोमेन में काम न करने वाले पीयर लर्नर्स या फिर उसके जूनियर्स, उनके सीनियर्स आके उस प्रेजेंटेशंस को देखें और उसके ऊपर अपना भाष्य करें, फीडबैक दें, करेक्टिव फीडबैक दें, ये भी एक तरीका हो सकता है असेसमेंट का। उसके बाद में 360 डिग्री assessment and evaluation of the student. Now, this is something very challenging. We talk about 360 degree. You might have heard about 360 degree. Nowadays, corporate people are using 360 degree performance appraisals or assessment based on that. Now, this 360 degree is not only single domain. It's not only about the mind. ये सिर्फ आपने वो skill सीख लिया, आप उसमें उसमें क्या बोलते हैं ये हो गए हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन 360 डिग्री में आपका व्यवहार कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप दूसरों को साथ में लेके साथ चल सकते हो क्या, आप आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअली कैसा रहता है, ग्रुप में कैसा रहता है, आपका टोटल बिहेवियरल पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, फिजिकल पैटर्न, आपका इंटेलेक्चुअल पैटर्न, ये सब चीजें 360 डिग्री में आती हैं। हर चीज, मतलब हर
जिसको कह सकते हैं दृष्टिकोण से उसका मेजरमेंट करना, उसको देखना। आज नेक भी हम जब इवेल्युएट करने आती है, फिर ग्रेडिंग आने आती है, तो बहुत जगह अनुमान 360 डिग्री ही होता है। कॉर्पोरेट में तो बहुत ज्यादा 360 डिग्री होता है कि ये व्यक्ति का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा है, ये इसकी लीडरशिप कैसी है, इसका कम्युनिकेशन कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये टीम मैन है क्या इंडिविजुअल है, इसकी लीडरशिप कैसी है, इसका एटीट्यूड कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, एग्रेशन मैनेजमेंट कैसा है, सेल्फ कंट्रोल कैसा है। All these things can be one of the criteria for the 360-degree assessment and evaluation of the learner, can also take way developing and implementing the holistic assessment. उसके बाद में है आपको वर्चुअल मोबिलिटी ऑफ वोकेशनल स्टूडेंट्स। हमने बीच में हॉरिजॉन्टल देखी थी, अब हम वर्चुअल देख रहे हैं कि जो उसने लिया है उसको आगे कैसे कर पाएगा, ऊपर कैसे लैडर पे चढ़ पाएगा। तो उसके लिए द कोर्सेस अंडर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, NSQF, or the National Higher Education Qualification Framework, shall provide for vertical mobility to students with vocational subjects at the school level. ये कहीं ना कहीं जवाबदारी देनी होगी, और ये NSQF वाले जो हैं या फिर नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है, वो निश्चित देखें कि जो बच्चा स्कूल लेवल पे जो स्किल लेके आ रहा है उसको एनहेंसमेंट करने के लिए, हम उसको फॉस्टरिंग करने के लिए वर्टिकल लेवल पे कुछ दे पा रहे हैं क्या, ऊपर के स्तर पे कुछ दे पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ा गैप रह जाए, जो उसने स्कूल में सीखा है और वो कॉलेज में मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर जो स्कूल में सुना है वो बहुत ही बेसिक है और हम जो कॉलेज में दे रहे हैं वो बहुत एडवांस तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका स्किल का असेसमेंट करना पड़ेगा, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस स्किल की कितनी है, ताकि हम उसको आगे जाके दे पाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अभी उस पर काम करना शुरू किया। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट रेडी होता है उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होना, स्टूडेंट को वजह से मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री तो है ही है, कोर्सेस में भी उस हिसाब से, तो गैप ना रह जाए, गैप ना रहे स्कूल में और कॉलेज में। रादर स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से एक ब्रिज बन सकते हैं ताकि वो लैडर को चढ़ सके, वो रिग्रेसिव मोड में ना जाए कि ये तो मेरा पहले ही हो चुका है, कॉलेज क्या मुझे ऑफर कर रहा है, दिस इज आई हैव ऑलरेडी डन इन माय स्कूल। क्योंकि लेवल्स के हिसाब से हमें वो असेसमेंट के हिसाब से, स्किल असेसमेंट के हिसाब से हमें प्रोग्रेसिवली देखना होगा कि हम अपवर्ड कैसे मूव कर रहे हैं। अपवर्ड मूव करते हुए बच्चे को एक एनलार्जमेंट मिलना चाहिए, एक एनरिचमेंट हुई है, जो वो पहले लेके चल रहा था उससे आज उसको कुछ ज्यादा मिल रहा है, वो हासिल कर पा रहा है। ये फील कंटेंट के माध्यम से उस बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके वर्टिकल मोबिलिटी हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि ये समझने की कोशिश कीजिए कि स्किल डेवलपमेंट हम लोग कक्षा 6 से शुरू कर रहे हैं। जब कक्षा 6 से जब शुरू हो रहा है तो हमें कितनी ज्यादा उसमें रिसर्च करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, कॉलेज तक लेते हुए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेते हुए, और जहां पे अब डिग्रियां इंटीग्रेटेड डिग्रीज होंगी। अब पहले जैसा नहीं होगा कि हम लोग इंटीग्रेटेड में ही, बहुत जगह पे इंटीग्रेटेड डिग्रीज की शुरुआत होगी। जैसे बीएड में है, अभी बीएड अभी इंटीग्रेटेड बीएड होगा। अब वो जो पहले सिर्फ बीएड किया जा सकता था +3 के बाद में 2 साल के लिए बीएड अभी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, पहले 1 ही साल के लिए बीएड होता था, अब जाके हमें इंटीग्रेटेड, अब हमें बहुत सारी डिग्रीज, इंटीग्रेटेड डिग्रीज मिलने वाली हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार होते हुए दिख रहा है कि हम स्कूल्स को विभक्त नहीं कर सकते, हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन को छोड़ नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ हायर एजुकेशन में हम लोग वही डोमेन देखेंगे। हमें कहीं ना कहीं वो चेन को पूरा करते हुए, क्या चीज प्री प्राइमरी कक्षा 6 में दी जा रही है, 7वीं में दी जा रही है, 8वीं में दी जा रही है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में क्या दिया, ताकि मैं फर्स्ट ईयर में उसे क्या दूं ताकि वो उसको वो एनरिचिंग लगे, रिपीटेड ना लगे। तो वर्टिकल मूव करते हुए हमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, हमें स्किल्स को भी देखना पड़ेगा कि उसकी पहले स्किल की क्या लेवल थी, वो आगे जाके उसमें एनहांसमेंट लगे उसको। सो वर्टिकल मोबिलिटी बहुत ज्यादा
आवश्यक तो है ही है, उसको फॉस्टर भी करना है, उसको एनहांस भी करना है, उसको शार्पन भी करना है, उसको मार्केट के अनुरूप भी रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, उस लर्नर को ये लगे कि मैंने कुछ नया सीखा है, मैं कुछ नया सीख रहा हूं। नो डाउट हमें बेस लगेगा, हमें फाउंडेशन जरूर लगेगा, रिपीटेशन जरूर लगेगा, रिकैप्चुलेशन की आवश्यकता बहुत जरूर पड़ती है, ताकि हम चेक कर पाए कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। लेकिन ऐसा ना हो बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है और वो आगे जाके उसमें वो उत्साह ना रहे उस स्किल को एनहांस करने के लिए। हम लोग कुछ सैंडविचेस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे सकते हैं क्या, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि वो फॉस्टर कर पाए। अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है तो हम उसको मोबाइल्स के ऊपर ऐप डेवलप करने के लिए कुछ प्रोत्साहित कर सकते हैं क्या, विच कैन वेरी मच गो विद द मोबाइल रिपेयरिंग एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो काफी लंबी चीज हो जाएगी, वो इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन डिजाइन करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसके एप्स पे काम करना है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ में चल सकती हैं, जो शायद स्कूल में उस बच्चे को ना मिले। लेकिन हमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, ताकि उसको लगे कि मेरे स्किल की एनहेंसमेंट हो रही है, मैं रिग्रेसिव मोड में नहीं जा रहा हूं, मैं नेगेटिव मोड में नहीं जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट के मोड में जा रहा हूं। ये एक चैलेंज था जिसको हम लोग निश्चित इससे नेशनल जो अपना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से, या फिर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से, जिनका प्राइमरी ही जॉब है कि हमें टास्क को क्लासिफाई करना है और उनके हिसाब से कंटेंट डेवलप करना है, उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट वैसे करना है। आज अगर आप NSFQ का देखेंगे, आप उनके साइट पे जाके देखिए, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे जाके देखिए, या फिर न्यू स्किल डेवलपमेंट का इस पे देखिए, तो आपको अगणित हजारों की संख्याओं में छोटे 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 टास्क को उन्होंने डिवाइड किया है, उसके ऊपर कंटेंट तैयार किया है, उसके ऊपर प्रैक्टिकलिटी रखी है, इंटर्नशिप रखी है, और ये सब कुछ होते हुए दिखेगा आपको, ताकि लर्नर निरुत्साही ना हो, उसमें उत्साह आए कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ensuring प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन फॉर क्वालिटी वोकेशनल टीचर्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम ये सब तो कर रहे हैं, ये सब तो होगा भी, आज नहीं तो कल जरूर होगा, लेकिन उसके लिए लगने वाला स्किल्ड मैन पावर है, उसके लिए लगने वाला जो टीचर है, वो उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो उसका उपाय जो अपने पास है, जिसके बारे में हम लोग सीरियसली सोच सकते हैं, डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ वोकेशनल टीचर्स हमें डेवलप करना होगा, क्योंकि हमें वैसा गुरु देना होगा कि जो एक कम से कम एट पावर, पावर तो है लर्नर की, हमको वो ईगोइस्टिक टीचर नहीं तैयार करना है कि भैया मुझे सब कुछ आता है। हमें वो टीचर देना है जो बहुत रिसेप्टिव है, जो सीखने की तैयारी में है, जिसका माइंडसेट ओपन है, जो करेक्शन करने को तैयार है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ वोकेशनल टीचर्स इन यूज ऑफ इनोवेटिव पेडालॉजी अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब ऐसा कैपेसिटी वाला हमें टीचर तैयार करना है जो इनोवेटिव पेडागोजी पे काम करने को तैयार है, जिसकी रिजिडिटी नहीं है। डे वन याद कीजिए, जब हम लोग पहली बार पैंडेमिक के बाद में ऑनलाइन कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, जूम को कैसे करना है। उसके बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए आपके, गूगल मीट आई, कैसे शेयर करेंगे, कैसे ये करेंगे, तो चैलेंजेस जरूर थी, लेकिन उन चैलेंजेस के ऊपर हमने मात किया, उस चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया। आज हम बहुत सरलता से इनोवेशन की तरफ जाके, इनोवेटिव वेव के माध्यम से जाके कनेक्ट भी होते हैं और अपनी चीजों को प्रेजेंट भी करते हैं और बताते भी हैं। तो वो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आज जो हम जिस प्रोग्राम में हैं, जिसका उद्देश्य ही ओरिएंट भी करना और सेंसिटाइज भी करना है NEP के बारे में, और इन पर्टिकुलरली स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तो वैसा ही कुछ हमें अपने टीचर्स को भी सेंसिटाइज करना होगा कि हाँ, आज टेक्नोलॉजी को हमें लेके साथ चलना होगा। आज टेक्नोलॉजी हमारे साथ रहेगी तो वो हमें प्रोग्रेसिव लुक देगी, हम उसको छोड़ के नहीं चल सकते, हमें उसको साथ में लेके चलना होगा। तो उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना, प्री सर्विस ट्रेनिंग हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, सर्विस से आने से पहले कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं क्या, जिनको हम लोग प्री सर्विस बोल रहे हैं कि भैया अगर मुझे सर्विस में जाना है तो मुझे 10 दिन का कोर्स करना होगा, 15 दिन का ट्रेनिंग करना होगा, जिस ट्रेनिंग
ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग प्रिपेयर करेंगे टीचर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनर्स थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम आप ले सकें, ऑफर्ड थ्रू स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन। SCRT ये बहुत जगहों पे कर रही है ऑलरेडी। महाराष्ट्र में SCRT, पुणे में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है, यशोदा में काम होता है। जो NEP के बारे में ऑलरेडी निर्भय भारत के माध्यम से शिक्षकों को 5वीं से 7वीं तक वालों का ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वैसा कुछ प्रोग्राम हमें SCERT के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं हम लोग थ्रू जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं क्या, बड़े बड़े IITs के माध्यम से कर सकते हैं क्या हम लोग, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन के मोडियम के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, और थ्रू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम लोग DIET के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो एजेंसीज को लेके प्रोग्राम को तैयार करना और उसके ऊपर काम करना, ताकि जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो निश्चित बने से ये पक्का हो कि उसका ज्ञान भी एनहांस हो चुका है, वो भी एनरिच हो चुका है। नहीं तो ऐसा हो कि भाई उसका नॉलेज थोड़ा सा इंफीरियर है, ये होना नहीं चाहिए। ऐसा हुआ तो चैलेंजेस अलग आएंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें SCRT की मदद से या फिर हमें DITs की मदद से अपने प्रेजेंट जो टीचर्स हैं जो वोकेशन में डील कर रहे हैं या फिर नहीं भी डील कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं है जहाँ पे हमारे बहुत सारे टीचर्स को भी वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट की तरफ रुझान दिखाना होगा, क्योंकि वो डिमांड होगी फॉर द टाइम, वो द डिमांड होगी, उस वक्त की डिमांड होगी जिसे हमें पूरा करना होगा। तो अभी से क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें कि हमें भी उन स्किल्स की तरफ को अपने आप को लेना होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या फिर हम लोग ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड के माध्यम से जो दे रहे हैं, उन सब चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मदद जरूर लगने वाली है। उसके बाद में एक्सटर्नल ट्रेनर्स एक्सपर्ट्स इन वेरियस वेकेशन टू बी इनवाइटेड टू ट्रेन टीचर्स। नाउ दिस इज एन ओपन रिसोर्स आई वुड लाइक टू से, कि जहाँ पे आज हमें हमें हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक्सपर्ट जरूर मिलता है, और रादर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। उन एक्सपर्ट्स को हम लोग बुला सकते हैं, उन एक्सपर्ट्स की हम लोग शेयरिंग सुन सकते हैं, उनके तजुर्बों को सुन सकते हैं, उनके तजुर्बों को वक्त काम होते हुए देख सकते हैं, हम उनकी जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग्स को समझ सकते हैं, या फिर उनके ऑन द जॉब ट्रेनिंग आए हुए एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं। मेंटर्स अगर मिलते हैं हमें, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को आजकल मेंटरिंग का काम करते हैं, उनसे ले सकते हैं। तो ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनका डिफरेंट वोकेशंस के ऊपर उनका एक क्या कह सकते हैं तजुर्बा भी है, एक्सपर्टीज भी है, उनको बुला के टीचर्स से इंटरेक्ट करवाना, या फिर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स में भी ये चीजें हो सकती हैं, या फिर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स में ये चीज हो सकती हैं, या फिर DITs के मदद से, जिसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से हो सकता है। ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड घटक पक्ष हैं, इनको खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इनके लिए हमें कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं हमारे, जिनकी तरफ हमें मदद के लिए जाना है, जिनकी तरफ हमको उनको आह्वान करना है कि आप हमारी मदद के लिए आ जाइए, हमारे टीचर्स को आप ट्रेन कीजिए। तो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना ये आज बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन वो सुलभता से भी हो सकता है, इजीली हो सकता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। Ensuring that vocational training providers meet quality standard across institution based on the common norms. ये जरूर होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हम जो भी दे रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड हो, वो उसकी एक गुणवत्ता रहे, उसकी एक क्वालिटी रहे, और वो क्वालिटी देते हुए सबके लिए हर एक इंस्टीट्यूशन को कॉमन नॉर्म्स रखे जाए। उसमें डिफरेंट यार्ड स्टिक्स की आवश्यकता नहीं है, उसमें अलग अलग दर्जों की आवश्यकता नहीं है। हमें उस तरफ जाना है कि जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम हम उस इंस्टीट्यूट को, उस व्यक्ति को उस दर्जे का एजुकेशन दे पाए। तो वो देने के लिए, जैसे मैंने कहा कि पारंपरिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं जिनके तक हमें पहुंचना होगा, और हम उनके लिए कॉमन नॉर्म्स के माध्यम से fostering innovation and training for teachers through partnership
between the vocational training partners, institution, industries and research institutions. कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए बहुत बार हमें हम कहते हैं कि वॉक द टॉक करना होगा, कि हमें चलना होगा उस मार्ग पे, सिर्फ बोल के नहीं होगा। तो उसके लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना, इंडस्ट्रीज को विजिट करना, सिर्फ इंडस्ट्रीज को विजिट करके शायद ना हो पाए, क्योंकि बहुत बार इंडस्ट्रीज को विजिट करना सिर्फ विजिट हो जाती है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन हम लोग स्किल बेस्ड कुछ देख सकते हैं। क्या हमें अपने स्किल्स को एनहांस करना, तो किस हिसाब से वो कर पाएंगे, कैसे हम लोग कर पाएंगे, ये सब चीजें ऑलरेडी एक जिसको कह सकते हैं एक बलशाली भारत को निर्माण करने के लिए बहुत जगहों पे हैं, ऑलरेडी एग्जिट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचना, रिसोर्सेस तक पहुंचना और सही वक्त पे पहुंचना, करिकुलम को सही वक्त पे डिजाइन करना, अपने टीचर्स की कैपेसिटीज को डेवलप करना। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज के एचआरडी डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज करते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, ये बात अलग है कि उनसे प्रमोशंस लिंक्ड है, लेकिन उसका एक ये भी होता है कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो लर्नर है, वो अपडेट रहे, वो किसी भी इसमें पीछे ना रहे, उसकी समझ प्रॉपर रहे, वो जो नई चीजें आ रही हैं उसको वो समझ सके, उसको हैंडल कर सके, और वो एक फॉरवर्ड लुकिंग रिसेप्टिव माइंडसेट से जाए। ये सब उसके उद्देश्य कहीं ना कहीं होते हैं, और वही उद्देश्य हमें अपने जिसको कह सकते हैं कि हमें लेके चलना है एनईपी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। इसी चीज के बारे में गवर्नमेंट का क्या आउटलुक है। हम कई बार देखते हैं कि ये एनईपी तो बहुत बढ़िया है, अगर हम अभी भी एक ओपिनियन पोल लें तो आपको सबको लगेगा दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, लेकिन ये सब बेस्ट होते हुए गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से क्या कर रही है, उसका एक लेखा मैंने थोड़ी देर पहले या फिर 2 घंटे पहले जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था आपसे बात करने के बाद, तो मुझे एक रिटन स्टेटमेंट पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन श्रीमती अनुपमा देवी जो हैं, उन्होंने दिया लोकसभा में कि हम एनईपी को किस हिसाब से, और वो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था, वो स्पेसिफिक था कि हम स्किल को कैसे बूस्ट करने वाले हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन अंडर एनईपी को हम लोग कैसे नेविगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल रहेगा। बिकॉज आज भी हमारे असंख्य स्कूल और असंख्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये गवर्नमेंट के फंड्स और गवर्नमेंट के इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पिवटल रोल है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, जिसको हम लोग करीब अगले 20-25 साल तक उसको शायद हम लोग टाल ना सकें। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, स्टार यूनिवर्सिटीज, काफी ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि पाश्चिमात्य के भी यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी, बहुत बड़े, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट रखते हैं, जहाँ पे हमारा करीब 40 करोड़ के बीच में यूथ का पॉपुलेशन है। ऐसा ह्यूज मार्केट, एंड फॉर इक्वली ह्यूज फॉर द स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज हम विविधताओं से भरे हुए राष्ट्र हैं। हमारे पास विविधताएं बहुत ज्यादा है, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक जिले की अपनी एक विविधता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे वो कल्चर की हो। तो उसमें हर एक आयाम में स्किल डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट रहता है और रहेगा। अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं आपको एक नटशेल में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, और उसके बाद में हम शायद अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हम निश्चित से उसको ले पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 25 जुलाई को 2022 में, और उसको टेबल किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस convergence efforts across the skill ecosystem under Skill India mission. Now, the government of India has started a mission known as Skill India Mission. पहले आपका PYMK था, पहले स्किल इंडिया के बारे में बहुत सारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, काफी कुछ काम स्किल डेवलपमेंट पे हुआ है, लेकिन जब हम लोग मिशन मोड में आते हैं
तो ये काफी प्रोग्रेसिव लगने लगता है, काफी ज्यादा उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखता है. अंडर द मिशन, more than 20 central ministries, as I've already mentioned, departments are implementing skill development schemes, programs to enhance skill levels of millions of people, including school children, on pan-India basis to create skilled workforce as per the needs of the industries. So you can imagine the magnitude of 20 industries. It may be Highway Authority of India, it may be Steel Authority of India, it may be NTPC, it may be Indian Railways. These are the government ministries which has taken this Skill India mission on a war footing. And this is going to make it happen where you have seen millions of people are including school children, pan-India. The target is to make them ready what the industry needs. A path-breaking statement in the Lok Sabha. The National Education Policy 2020 has given special emphasis on vocational education through integration of mainstreaming of vocational education with general education, which will help students in acquiring various skills to meet the needs of the industry and improve the quality of education. Because ultimately, if the quality of education improves, my quality of life is going to improve. So what industry is asking for the integration of the mainstream subjects with the vocational subjects. That is what the government intent is. Government also wants that it should be implemented in letter and spirit both. Further, she says, the Department of School Education and Literacy is implementing the scheme of vocationalization of school education under the centrally sponsored scheme Samagra Shiksha by aligning it with the aims of Skill India Mission. So Samagra Shiksha Mission is going to collaborate with Skill India Mission. So both are going to work hand in hand right from the school education to the higher education. The scheme aims at integrating vocational education with general academic education in all secondary, senior secondary schools, enhancing the employability and entrepreneurship abilities of the students, providing exposure to work environment, and generating awareness among students about various careers option as to enable them to make a choice in accordance with their aptitude, competence, aspiration. The scheme covers government and government-aided school. Anything has to be started, and the government of India has started with the government-aided schools and government schools at the beginning, that how they are supposed to bring that exposure, how the aspiration, because India is a country with 141 crore population today. It may be more than that. I need to correct myself, but 141 crore people. 141 crore people have their own aspiration. Everyone who joins an institution for education has an aspiration. He also visualize, or she also visualize, what this education is going to bring it to him. So that aspiration has also to be considered in the education system. What the society actually wants, whether that aspirations are matching somewhere with education or not, or they are mismatched. What are you offering? The child wants it or not, whether the society wants it or not, or we are creating degree holders without having aspirations as such. So the government of India, the Department of Education, is constantly and consciously making an effort that we need to work. Skill India Mission has to work closely with Sarva Shiksha Abhiyan also. Sarva Shiksha Abhiyan is a massive program. If you talk about the magnitude of the program, nowhere in the world such a magnitude program was introduced. Same thing happened with the Skill India Limited also. So upgrading, giving them the new skills, polishing them more, giving them the equivalence, recognition,
dignity to the skill. That is the paramount importance, okay? How we give the dignity to the one who is doing a labor job, who is doing a mechanic job, who is doing a carpentry job, who is doing a plumbing job, who is doing a, you may say, on-site construction worker. Dignity is what we all are supposed. So it's not only about the job, it's about the dignity, which is being equally important. So the initiation has already started with the government aided and the government schools. Under the scheme, NSQF, vocational courses are offered to the students from class 9th to 12th in the schools covered under the scheme. So it's already being started. You can take the name of Central Board of Secondary Education, Kendriya Vidyalayas. You can talk about Navodaya Vidyalayas. You can talk about aided schools which are being run by government aid. It has already initiated. It has already begun with the class 9 through 10. Because why it is being started with 9 to 12? The reason is simple, that they are going to be your immediate first learners when they come into the campus, when they enter into the colleges. So it has introduced at the right time with the standard 9 to 12th, with levels of skill enhancement, level 1, level 2, level 3, level 4. And as we all know, nowadays we are not going to have junior colleges anymore. It is going to be clubbed with, or they are going to be very much with the schools itself. So 11, 12 is no more going to be with the junior college concept as such. It is going to be very much with the school itself. So 9th and 12th in the schools covered under the scheme. At the secondary level, classes 11th and 12th, vocational modules are offered to the students as additional subject. So 11th and 12th, vocational 11 to 12, vocational courses are offered as compulsory. Now remember, the word compulsory is more important. That means it is mandatory to have one skill from 9th onwards till 12th. So the student will have a choice. He has to pick up the subject, which skill he wants to enhance, which skill he wants to go for. So it is mandatory. Though it says elective subject, means there are going to be choices. Out of 10, out of 15, out of 4, out of 5, I don't know the number, but the choice is going to be given to the learner. The learner has to pick up a subject, which skill the child wants to enhance, and the proper infrastructure has to build upon for that skill. Vocational courses are selected on the basis of national hours, age, educational qualification, prescribed and suitability for the school students. Again, whether the skill is suitable for the student or not, local, what we say, local jnana, local kaushalya, whether it is in the need. We are not supposed to export a skill. We are supposed to see which skill is locally in demand, which skill is in the demand of the industry, which skill the child actually wants to enrich, wants to learn, is going to be the focus. It's going to be somewhere in the mainstream itself. And the suitability also, whether it is suitable for that school or not, whether it is okay with that school or not, but it has to done in congruence with the age specific, with the educational qualification specific. You cannot bring a rocket science skill for a class 6th standard student or a 7th standard student. You are supposed to go phase by phase. You are supposed to go step by step from simple to complex, from near to far, from simple to abstract. So that way, the vertical progression has to happen. So 9th, 11th, 9th to 11th, the student is made to have a compulsory choice. That compulsory is out of the electives which the school is going to offer. So it is out of the electives which the school is going to offer, depending upon the school standards. This also. The state government has given advice that vocational courses are to be treated at par with their other academic subjects
again a path breaking. It is no more an extracurricular. Skills are going to be part of the curriculum. It is going to be academic subjects. Henceforth, no more a choice, no more an extra subject the child has learned. So it is going to be academic subject in accordance to a similar status in the scheme of subjects. If this child is learning 5 subjects and if he has taken skill, would be the 6th subject. If there are 8 subjects, if the child has taken 2 subjects of the skill, they will be given acceptance, or they are going to be recognized as subjects equivalent to academic subjects. Under the scheme of employability skill module has been made a mandatory part of the vocational courses. It consists of communication skills, self-management skills, information and communication technology skill, entrepreneur skills, and green skills, environmental friendly also. C, till now we were talking about something about the skills which are being taken into consideration. अब तक जो हम बात कर रहे थे वो पूरी क्या थी? Hard based, hard skills. लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट की बात करते हुए कहीं ना कहीं हम फिर से किस चीज की बात कर रहे हैं कि उस लर्नर के संभाषण कौशल्य कैसे हैं, वो खुद को कैसे अपने आप को सेल्फ मैनेज कर पा रहा है, उसके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, उसके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसी है, उसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कुछ स्किल उसमें है, या फिर वो एनवायरनमेंट के बारे में भी कितना ज्यादा सचेत है या फिर संवेदनशील है। तो हमें हार्ड कोर स्किल्स के साथ साथ में सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी उतना ही सचेत, उतना ही संवेदनशील उस बच्चे को बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे मार्केट को फेस करना है, अल्टीमेटली उसको काम पे जाना है, अल्टीमेटली उसको लोगों के साथ काम करना है। तो हार्ड स्किल्स तो पक्के हैं, लेकिन उसके सॉफ्ट स्किल कितने ज्यादा अच्छे हैं, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी कितनी ज्यादा है, उसमें कितनी परिपक्वता है, समझ इससे कितना ज्यादा है, टेम्परामेंट उसका कितना है, उसकी पर्सनैलिटी का एक आउटलुक कैसा है, खुद को कैसे प्रेजेंट करता है, खुद की बात को कैसे रखता है, लोगों को साथ में कैसे लेके चलता है, ये सब चीजों का एक, जिसको कह सकते हैं कि एक अपना महत्व है, उसको भी हम स्किल डेवलपमेंट में साथ में लेके चल रहे हैं। और ये कहाँ से लेके चल रहे हैं? हम लोग स्कूल लेवल से लेके चल रहे हैं, ताकि जब वो महाविद्यालय के या फिर विश्वविद्यालय के दरवाजे पे आए या फिर आपके कक्ष में आए, तो एक समझ के साथ में आए, एक थॉट प्रोसेस के साथ में आए कि ये मुझे पहले से पता था और मैं इसके ऊपर आपसे ज्यादा जानना या फिर उसको ज्यादा एनरिच करने की बात कर रहा हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप in association with Ministry of Education is implementing the Skill Hub initiative scheme under the Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana. Skill hubs are nodal skill centers identified to provide skill development and vocational training opportunities to target school dropouts and out of education system. मतलब आज जो प्रवाह से बाहर चले गए हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, हार्डशिप्स के कारण नहीं कर पाते होंगे, इकोनॉमिकल एंगल से नहीं कर पाते होंगे, उनको फिर से प्रभाव में लेके आना, उनको फिर से प्रवाह में लेके आना और उस प्रवाह में लेके आके उनके साथ में उनका एजुकेशन को कंटिन्यू करना, वो स्किल हब का इनिशिएटिव दिख रहा है। और उसी के साथ में प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना का भी, कि जो बाहर चले गए हैं कारण कुछ भी हो, उन्हें हम फिर से स्किल डेवलपमेंट के रूट के माध्यम से लेके आ सकते हैं। और आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एज अ स्टेप टूवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड स्किलिंग थ्रू स्किल हब्स, अ पायलट हैज बीन लॉन्च्ड इन द जनवरी 2022। ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है स्किल हब के माध्यम से, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द लोकसभा, सो इट्स इन अ रिटन फॉर्म स्टेटमेंट which was given, and there are initiatives which are being already taken by institute, higher education institutes. Portals are being opened by AICT, where an online registration has been already begin, where industry fit, where we can talk about the people, those who are looking for forward-looking jobs, the portals are being created. So in all, if we talk about skill development and employability, with which I'm going to conclude my talk, okay,
India is going to have the largest working age population in the world by 2030. Probably, we will becoming the exporters of human resources to the world. World is shrinking in population, but India is growing not in the population, even in our population case, it is being on a decline now. It is not that rapid it was a decade back or 15 years back. We are declining, but at the same time, the working age population of the world in 2030, but gainful employment for students from the general system would be the major challenge for us. Improving the employability of students requires a new vision of a curriculum. NEP 2020 has added education programs into the mainstream education. Courses will be available to students enrolled for bachelor's degrees programs, including 4 years integrated bachelor's degrees too. Higher institutions will be allowed to conduct short-term certificate courses in various skills, including soft skills. To realize the full potential of India's rich demographic dividend, it is essential to equip the young generation with skills in various trades. We cannot just demark them for one specific, but we are supposed to give them range of trades where they can enhance their skills, because we have a demographic, you may say, heritage. That is why it has become all the more important to have strong link between academia and industry. I'm time and again saying we need to have a proper industry academia interface, not only for the engineering colleges, but for the mainstream colleges too. Apprenticeship or internship for skill development has a prominent role to play in linking higher education with the requirement of industries and the world of work. This is considered as one of the most effective ways to certain an industry-fit skilled workforce for the country. Once we have industry and in academia interface, probably the mistrust, probably the discontent, probably the unhappiness of industry can be taken away when we give them industry fit. What industry is requiring, if we are able to give that type of a human resource, industry is happy and we are also happy as we are providing them the best. So the UGC has already issued the guidelines of higher education institution offering internship and apprenticeship enabled degree programs. National online platform created. It is already being created. A portal is already being created. An online platform is created. By the time I'm reading this, more than 50,000 students have already registered themselves for these platforms. These guidelines will be enable Institute of Higher Education to bring about a paradigm shift in general stream degrees, programs, and employability support into the curriculum. The guidelines will provide an option to Institute of Higher Education to enable at least one semester of apprenticeship, internship to UG degree program. It's again something which is going to bring a positive change when one semester is going to be completely dedicated to internship, completely dedicated to apprenticeship. Means the child will come to know, the learner will come to know what the industry is asking for, and I'm going to equip myself with that. The guidelines also provide flexibility to institution to opt for any mechanism of internship, apprenticeship assessment in consultation with the commercial and non-commercial organization or enterprises, officers, industries association, sector skill council, where the internship apprenticeship is proposed. So there is a flexibility. It all depends upon who is providing you the internship and who goes for an internship. So there can be some flexibility into it. The AICT has also launched up an internship portal for enhancing student skills, employability opportunities, and transforming them into industry-suitable workforce. The portal brings together internship opportunities in the government sector. Now, Government of India has came up in a big way. Now, which industries from the government has given a green signal to it?
We can just listen to the portal brings together internship opportunities in the government sector, such as the Ministry of Housing and Urban Affairs of India, National Highways Authority of India, Indian Railway, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Micro, Small and Medium Scale Industries, corporate sectors, non-government organizations, startups, research organizations, including AICT initiatives for imparting skills and enhancement of employability in technical education. And very recently, even ISRO has given an open invitation for the internship in ISRO itself. So it's a big way, path-breaking, what I would like to say. NEP, if it is to be implemented, we need skilled teachers also, those who have equipped themselves to the demand of the hour. And probably, yes, it is going to make a huge impact in the process. Though it's a slow process, no doubt about it, as I was mentioning in the beginning, that education is not only the central government subject, it has a congruence with the state also. So we have almost like close to 5:30, but if you have a question or two, you're most welcome to. Otherwise, a 3 hours marathon talk. Over to Rafi, sir. #191. Jitendra? Jitendra, you want to say something? I'm not able to unmute you from my side. Not able to unmute. Yeah, 191. Yes. Okay. 191. You can unmute themselves. Good afternoon, sir. Yes. May I know your name, please? Vasant Jhende. Okay, Vasantji, please. Sir, just for a curiosity, I would like to know, just I'm working as in the capacity of sports director in the college. Okay. So what will be the role of NEP in sports in the college? A very good question, because sports itself is coming up in a big way in industry shape. Okay. Gone are the days when we used to have only amateur sports person coming into the arena. Today in higher education, we have so many leagues which have came up, right from the Kabaddi League to the Hockey League to the Indian Premier League in cricket. Then you have volleyball, football leagues coming into big way. So when we talk about these leagues, okay, no doubt your primary job is to work on the sports, to enhance the skills in the sports arena. But at the same time, sports management comes in a big way. Sports entrepreneurship come in a big way. These people may be hosting a one IPL, but they work throughout the year to organize, to auction the players. Lot of management goes into it. Okay, so we can look forward for that collaboration also. Okay, one aspect is that we need to create good sports person, no doubt about it. With the use of a technology, biofeedback and all, interface can be required. You may be knowing few of them, okay, how technology helps in enhancing the performance of the sports person, even, okay, mental, imaginary and all aspects. But at the same time, you have sports management also, okay. So sports management can go in a big way. I think Symbiosis University offers MBA in sports management also. So one can go for multiple things apart from the sports, where industries can come into it. Sports equipment has become a big
big industry now. Okay, people are more health conscious. People want to do regular physical exercises, in-house exercises. So one can go in that dimension also. One can think from that dimension also. Two participants have raised their hands. One is, हाँ जी बोलिए। सर लैंग्वेजेस के बारे में क्या परिस्थिति रहेंगी? लैंग्वेजेस के बारे में बहुत अच्छी परिस्थिति रहने वाली है, क्योंकि आप अगर देखें आजकल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स बहुत कम मिलते हैं। नो डाउट एआई ने बहुत ज्यादा प्ले करना शुरू कर दिया है। गूगल ट्रांसलेटर्स आ गए, लेकिन वो ट्रांसलेट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो भावार्थ नहीं दे पाते हैं। तो अल्टीमेटली लैंग्वेजेस की बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, फेसबुक और इनके ऊपर, तो वहां पे अभी बहुत ज्यादा भाषाओं के बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है। तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं। ये तो यस, लैंग्वेजेस के लिए मैं कहता हूँ दिन अच्छे हैं। आप आजकल शुद्ध बोलने वाले भी नहीं मिल पाते हैं, लिखने वाले नहीं मिल पाते हैं, और धीरे धीरे शायद लिखना ये कम ना हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे चल रहे हैं अभी। ओके, और उसमें अब तो वॉइस को आप ये कर दीजिए तो आपको टेक्स्ट मिलता है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा काम हुआ होता था, लेकिन आज भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं आ रहा। ट्रांसलेशन ऑफ यू में से अनुवाद की हुई पुस्तकें कितनी ज्यादा आ रही हैं। पहले इतनी ज्यादा अनुवाद हुए पुस्तकें मिलती भी नहीं थी अपने को। बेस्ट सेलर्स आजकल हर 15 दिन के बाद में अपने को मार्केट में मिल जाता है। क्यों मिल पा रहा है? टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन उतने ही भाषा पे प्रभुत्व रखने वाले लोगों की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, कि वो लिख पाए। और विलुप्त तो होती हुई भाषाओं के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता लैंग्वेज वालों के हिसाब से रहेगी। तो अच्छा खासा डोमेन है लैंग्वेजेस के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद सर। यस सर, हाँ जी। जैसे एनईपी में अभी जो लोग वेटरन्स है और वो एजुकेट होना चाहते हैं, तो उनके हाँ लिए कुछ है क्या? है। आप अभी वेटरन्स के लिए तो काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा आपको कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री शायद उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान सिद्ध होने वाली है, कि जिन्होंने कभी एजुकेशन लिया था और बाद में किसी कारणवश वो छोड़ पाए, या फिर महिलाओं के बारे में तो बहुत बड़ा काम, जिसको बोल सकते हैं बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ये जरूर है कि चैलेंजेस यूनिवर्सिटीज को जरूर होंगे कि इनको कैसे लेना है, इनका प्री असेसमेंट कैसे करना है, नॉलेज असेसमेंट कैसे करना है। आप लोगों को असेसमेंट करते हुए बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कौन सी एंट्री कब आ जाए, कहाँ से आ जाए, क्योंकि क्रेडिट लेके अभी मैं कहीं से कहीं पे भी जा सकता हूँ। और उम्र का वैसा मुझे लगता है कि यस, आप मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के कारण वेटरन्स की स्कोप बढ़ चुकी है। अभी मैंने किसी एक टाइम पे एमए किया था, फर्स्ट ईयर किया और छोड़ दिया। अब मुझे सेकंड ईयर करना है और आज मैं 50-55 का हो गया हूँ, तो शायद मैं कर पाऊंगा उसमें। लेकिन यूनिवर्सिटीज को अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करना होगा। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज की चैलेंजेस बड़ी हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ये अपने आप को ऑटोनॉमस, ये अपने आप को एक क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में काम कर पाते हैं। कन्वेंशनल को चैलेंजेस जरूर हैं, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज और एकेडमिक काउंसिल्स का दायित्व बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वेटरन्स को ज्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा इसमें। तो सर, मेन प्रोफेशनल कोर्सेज जो है, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज है, होटल मैनेजमेंट है, केटरिंग है, और जैसे बीएड है, इसमें एज लिमिट दिया गया है, नहीं तो वो वो आपको कैसे है? नहीं, आप धीरे धीरे देखेंगे इसके ऊपर रिफॉर्म्स होंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, ये अभी हम लोग
उतना चैलेंजेस को इन्विजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको अभी इम्प्लीमेंटेशन पे अभी आए हैं हम लोग। और जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे, हमें दिखेगा कि ये चैलेंज है तो इसको ऐसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा, तो वो होगा। जैसे पहले हम इतने ज्यादा सेपरेट होके चलते थे कि एमए वाला बीकॉम का एक सब्जेक्ट की तरफ देख भी नहीं पाता था, लेकिन आज वो हमें चॉइस मिला है। तो वैसे ही होगा कि जैसे चैलेंजेस आएंगी उसके रेक्टिफिकेशंस भी होंगे। और तो ये यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स और शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके ऊपर एक डिसीजन ले सके। यूजीसी सबसे बड़ी बॉडी है जो इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है कि एज रिस्ट्रिक्शन से अपने को आगे चलना पड़ेगा। पहले तो लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा होता थी कि इंजीनियरिंग करनी तो इंग्लिश बहुत मैंडेटरी होती थी, अब वैसा नहीं रहा है। आपने देखा होगा वो भी चेंज आया है कि अब हम मातृभाषा में इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं, कई जगह गुजरात में है एमबीबीएस अब हिंदी में कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। वो चेंजेस सर एक और एक क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे एनईपी के अंदर जैसे आपने बताया कि बहुत मल्टी डायमेंशन अपन टीचर्स होने चाहिए, हम्म तो उस हिसाब से अगर यूजीसी जो है हम लोगों हम्म को, जैसे अगर हम लोग अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं तो कुछ इंसेंटिव्स भी अगर यूजीसी देगा क्या इसलिए? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग बात नहीं कर पाए उसके बारे में कि बहुत बड़ा एक फंड जिसको मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च के लिए, जिसको कह रहे हैं हम लोग कि एक 500 करोड़ का रिसर्च का कॉर्पस तैयार किया गया है, कि जिसके माध्यम से जो टीचर्स सही में रिसर्च करना चाहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं, उनको वो मिले, उनके लिए उसका उपयोग हो सके। अब यूजीसी एक पेरेंट बॉडी है जो इंसेंटिव्स और इसके बारे में बात करती है। शायद हमें वो पे कमीशन का इंतजार करना पड़े कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देना चाहती है, या फिर किस और। अभी जैसे एपीआई का आपके यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, लेकिन एपीआई अलग चीज हो रही है। अब हम लोग जब जिस हिसाब से चल रहे हैं, जब कभी 8th पे कमीशन आएगा तो उसमें अपने को निश्चित से पता चलेगा कि हम लोग भी 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्राइजल के। हेलो। किया सुशील कुमार जी बोल रहे हैं। थैंक यू सर। Hello, ओके sir. Yes, yes. May I ask one question, sir? हाँ, आप डॉक्टर महेश दिलीप जी हैं? Yes, 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 sir. पूछिए, क्यों Sir, नहीं। आप कहाँ से हो? Mumbai, Borivali, Mumbai. बोरीवली मुंबई से हो? हाँ, तो हमारे पास Yes, के yes, बोलिए, पूछिए। yes. In the light of NEP 2020, what would be हम्म the future for Marathi medium schools, in your आई opinion, sir? हाँ, मेरे ओपिनियन से मराठी मीडियम स्कूल्स का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। और क्यों है उसका कारण बता रहा हूँ कि एनईपी पहली बार आ रही है जो मातृभाषा शिक्षण में और रीजनल लैंग्वेज के शिक्षण में बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रही है। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी विशेष काम हो रहा है। अभी जो एक फिलहाल जो एक स्कूल्स के ऊपर काम चल रहा है, मेरा स्कूल, उत्तम स्कूल, या फिर पुराने स्कूल्स को एनरिच करने की बात की जा रही है। तो मराठी माध्यम के फॉर दैट एनी रीजनल लैंग्वेज स्कूल और एनी मदर टंग, चाहे आप कर्नाटक की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, इन सब स्कूल्स को एक अच्छा खासा स्कोप मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मातृभाषा के शिक्षण को एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, और वो हो रहा है। उस हिसाब से Thank अगर you, sir. देखें तो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। And what would be the position of board? Different boards are working. State board, CBSE, ICSE. हाँ, अभी मैंने ये आपको शुरू में ही कहा था कि एक बहुत बड़ा चिंतन शुरू है कि इनको सबको रेगुलेट करने वाली एक ही बॉडी हो। आज क्या हो रहा है कि हर बोर्ड अपनी तरह से, अपने माध्यम से, अपने पद्धति से इवेल्युएट कर रहा है, और बच्चों को आगे जाके बहुत चैलेंज आती है। इक्वलेंस के लिए बेसिकली बहुत चैलेंज आती है। जब वो सीबीएसई से जाता है, कक्षा 10 में सीबीएसई से लेता है, स्टेट वाले बोलते हैं कि नहीं हमें तो इक्वलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसकी बहुत मारा मारी होती है, उसको समझ में नहीं आता ग्रेडिंग में कैसे रखें, परसेंटेज में कैसे रखें। तो एक बहुत सीरियस थॉट चल रहा है कि इनको रेगुलेट करने के लिए एक ही बॉडी हो, और सिर्फ रेगुलेट ना करे, सिलेबस भी कुछ हद तक वैसा ही हो। जो अभी यूनिवर्सिटीज में एक थॉट चल रहा है कि अगर हम क्रेडिट लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ से अगर इसमें क्रेडिट लेके चल रहा हूँ तो वहां पे वो सब्जेक्ट तो चाहिए कम से कम, क्यों, वो सिलेबस तो चाहिए मेरे को। तो उस हिसाब से यस, इट्स अ वेरी वेरी स्लो, इट्स लाइक वेट एंड वॉच प्रोसेस बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि लेटर में बहुत बढ़िया है ये, लेकिन स्पिरिट में लाने के लिए हमें सबकी ताकत लगेगी। सब स्टेक होल्डर्स को
साथ में आना होगा इस चेंज को देखने के लिए। हम ही अगर चले जाएं और बोले हमें मातृभाषा में शिक्षण नहीं चाहिए, तो पॉलिसी कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर पेरेंट्स में वो आउटलुक नहीं आए कि मुझे इसमें एजुकेशन दिलाना है, तो शायद उतना चेंज ना आ पाए। तो फिर वो फिर ग्रामीण में सीमित रह जाए और शहरों में मराठी फिर विलुप्त हो जाएगी, मतलब ढूंढनी पड़ेगी हमें कहाँ पे चल रहा है कुछ। उसके लिए स्टेक होल्डर्स को भी उतना ही प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी होगा कि नहीं, हमें इसकी जरूरत है। और फॉर्चुनेटली मैं कहूँ तो पिछले कुछ सालों में एक पॉजिटिव चेंज आया है इस बारे में कि नहीं, करिकुलम एक जैसा हो। अब आप देखेंगे कि एसएससी बोर्ड वाले भी अपने आप को सीबीएसई की तरफ पे रख के चल रहे हैं, तो कुछ कोलैबोरेशन जरूर हो रहे हैं जिसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलते हुए दिख रहा है। वो एक स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन एक थॉट जरूर है। हर एक मिनिस्ट्री और हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट वैसे सोच रहे हैं कि ये मिसमैच ना हो। थैंक यू सर। यस। राफेल जी कंक्लूड करें, इट्स ऑलमोस्ट 5:45। जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कंक्लूड कर देंगे सर। हाँ जी। एनी क्वेश्चंस? No, sir. So, on behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, UGC Malviya Mission Teachers Training Center, my special thanks to Dr. Ashwinikumar Bhardwaj sir for being here, sparing his valuable time and delivering us such a nice lecture on skill development in view of new education policy. And nice to see this interactive session before concluding. So I hope that in future also this type of interaction, all the participants will continue. Thanks a lot. I would now request Amol to end the cloud meeting.